Check, check. One, two, three. Testing the mic. Check, check, check. One, two, three. Check. Testing the mic. Check. One, two, three. Check. Testing the mic. Check. One, two, three. Check, check, check. One, two, three. Check, check, check. One, two, three. Check. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Check, check, check. Check. One, two, three. Check, check, check. One, two, three. Check, check. One, two, three. Check. Okay, perfect. Thank you.
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मन को जानता क्योंकि मन है मन का मीत। और चलिए मेरे साथ है नवनीत और जेएसजी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज का डे नंबर 2 में आप सभी का वार्म वेलकम करते हैं, खम्मा खड़े करते हैं। पधारो और नवीन, डे 2 पर हम सभी पधार चुके हैं। एक और एंथ्रोलिंग दिन हमारा इंतजार कर रहा है। Thank you so much, Arshad. Yeah, it's been a fabulous day yesterday. We had seen what we can probably expect the entire series going in, but today I'm sure we will get something else on the points table. We will be making sure the bottom two teams lying out there in the points table will be something to really watch out for. And what am I really looking at is those two teams at that last two position. Make some mark. But as in when which team? जी हाँ, देखिए आज वैसे हर एक मुकाबला यहाँ पर बहुत ही कांटेदार होने वाला है। और एक बड़े मुकाबले की जब आप बात करते हैं तो पेरियार को मुरतल के विरुद्ध खेलना है और साथ ही साथ अरावली को खेलना है पलनी के विरुद्ध। तो अरावली की टीम कल बेहतर रीडर्स के साथ नजर आई थी, अगर आज मजबूत डिफेंस चला, बट मैं पलनी को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन है दोनों टीमें। We'll be expecting Palni Tuskers to do something. But Ashit, I think we've already got somewhere we can actually go out there for the top raiders or top defenders, where we can actually talk about them, especially when you say Pushpa Rana and everybody going out there in the mix. So we've got some names already to actually go upon and look forward to for these names, isn't it? Top 3 raiders and defenders. तो आइए तो पहले टॉप 3 रीडर्स की बात कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा नवीन कि बहुत सारे नाम हमें ऑलरेडी मिलने जा रहे हैं और जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक टीम का रहा है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। आइए टॉप 3 रीडर्स की तरफ ले चलते हैं। तो टॉप 3 रीडर्स की जब आप बात करें, तीनों परफॉर्मर्स ने बहुत अच्छा कार्य किया और इन तीनों रीडर्स ने अपना सुपर 10 बनाया है। And why not? Look at this, Pushpa already there. Yeah, Pushpa Rana Jaipur, that's what she is, and she already is making sure she's already a big all-rounder. And Nikita coming in there for Murtal Magnets, and you can forget that 4-point raid that she put in. She's just 15-year-old and she has already backed the top raiders in the first day. And Nidhi Sharma, of course, is there. But there were some good defenders as well. Yeah. And I'm expecting Dimple to be in the top 3 list, maybe. जी हाँ, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दर्शाया डिम्पल ने और बिल्कुल उनका जिस प्रकार का नाप है बिल्कुल उसी के अनुरूप प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आए हैं। बट एक चीज देखकर अच्छा लगा कि वहां पर पलनी टस्कर्स के 2 डिफेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा नवीन तो ये समिट राउंड को सबमिट कर सकते हैं बहुत ही शानदार अंतराल के साथ। Yeah, 2 corners, the right and the left. Yes, Logeshwari on the left corner, Sneka on the right corner. So both of them have done well, and surprisingly no Dimple in that list. Yeah, probably she's there. She's going to come in. But Sunaina Jagdish always there. Panchala Pride, they played a good match yesterday. So yeah, so there is so much to actually look forward to, and today there will be changes in those top 3 and top 3 defenders list. Harshit, I think today also we have 3 matches coming up. जी हाँ, 3 बड़े मुकाबले आज भी आने वाले हैं कल की तरह। और आइए आज के स्केड्यूल की बात करें तो एक बहुत ही कांटेदार मुकाबले के साथ आज शुरुआत होने वाली है। पहला मैच खेला जाएगा मुरथल बना पेरियार। 2 टीमें, मुरथल पिछले मैच में एक बहुत ही अलग मुरथल नजर आई थी, क्या उसी प्रकार के फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को आगे ले जा पाएगी? बट पेरियार के बड़ा मुकाबला है नवनीत। दूसरा मुकाबला Yeah, actually, and Himalayan Tars and the Panchala Pride. See, because yesterday they both have actually won, so they will be going away with a lot of confidence going in. And Aravali Arrows, Palni Tuskers, yes, they will be putting out their first victory on the points table. So it's very interesting. So I think we will probably first talk about that match itself, because we've spoken about so much about Aravali and Palani. And see, as you very rightly mentioned, yes, there was a good bit of raiding, but the defense did not have a problem. But the top 3 defenders have Logeshwari and Sneha. So where do you actually look the problem there for the Palni Tuskers is my question, because you have Kajita out there playing very nicely, and when you say she's playing nicely, the defense is also good. But you don't forget, yeah, there is Aravali Arrows coming in front of them. जी और अरावली एरोज की निधि शर्मा जिन्होंने बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दर्शाया और सुपर 10 बनाया हिमालयन थार्स के मजबूत डिफेंस के विरुद्ध, तो उनके परफॉर्मेंस को जरूर हम निहारना चाहेंगे। और आइए देखते हैं उनकी शानदार किक्स। Yeah, she will be going front up against Logeshwari from the left corner. When Nidhi Sharma is going towards that left corner as a right raider, see what she's got is she's got the anti-blocks, Arshit. The anti-blocks are very good, but she doesn't turn towards the lobby. As a right raider, as we always say, turn towards the lobby is not there. So if the cover defenders of Palni Tuskers, because see Logeshwari on the left corner and Snega on the right might not be able to come in for the dashes, but if the ankle hold comes in, it'll be nice. But the covers, that will be the point to push away Nidhi, because she doesn't use the lobby and go away. But yeah, speak of the raiding front in Palni Tuskers, only a sole warrior I felt from her team, isn't it, Khatija?
जी हाँ, कतीजा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दर्शा और एक बहुत ही लीथल रेडर नजर आई है। एजिलिटी उनकी बहुत ही अच्छी नजर आई और जब आप उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, किक जिस तरह से उन्होंने लगाई, लेफ्ट कॉर्नर को उन्होंने जिस तरह से बुलडोज किया और मल्टीपल स्किल्स, नवीन किसी एक स्किल की मोहताज नहीं दिखी। हैंड टच आप देखिए किस तरह से अपने रीच को बढ़ाते हुए नजर आए हैं और ये प्लेयर आज बिल्कुल प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाली है। And also her height, you know, where she's going in and traveling around the court, that's very nice. 2 steps, she just gets the court away and she can switch to corners very easily. So if that is what Khatija can do today, but it'll be nice to see that if she can get a second raider support. We've not seen that yet. We've seen the corner combination from the defense, but the raider combination is not yet there for the Palni Tuskers, hoping that will come out today. जी और जैसा हम कहते हैं ना कि एक अकेला चना बाहर नहीं डो सकता, तो सपोर्ट वहां पर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम भी दो हैं, नवीन और हर्षद। बट आइए मैच नंबर 5 की बात करते हैं नवीन, जो हमने कल के पोस्ट शो में बात की थी कि बहुत ही बड़ा मुकाबला आने वाला है। 2 टीमें जो कि शानदार खेल के साथ आ रहे हैं, हिमालयन थास भिड़ेगा पंचाला प्राइड के विरुद्ध। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीमों पर बहुत सभी दर्शकों की निगाहें होने वाली हैं। Yeah, because see, as I said, it's going to be a match of 2 winners. They have seen this match, they know what the conditions are, they know how to perform in front of the cameras and lights. They've got that, you know, under their belly, which is a tough one to do because you've been playing so many years. This situation is something different. To really go out there and say any situation is not different is for Pushpa. The way she comes in, as I said, Arshit, I've seen her in every league and every series that she's been played on, and also more importantly the Khelo India games, Khelo India University games, youth games. Pushpa Rana Jaipal is a real force to watch out for. She's got the escape routes, look at that. She's already having the escape route in the hand and in the mind as well, and she also respects the other players. You saw what happened there. She was just saying sorry because she hit the opponent on her face. So that respect towards the other players, and also as a raider, she's got the escape route planned in her head. And the cartwheel, how have you seen a cartwheel raider escaping? Yesterday, even for some simple raids, she was cartwheeling. I've not seen, apart from say Stromy Sudhakar, if apart from him anybody have gone in and did a cartwheel to escape. So yeah, Pushpa, she's there today as well. और नवीन सबसे अच्छी बात उनकी है कि उनमें हंगर है पॉइंट्स लाने की और सही तरह से वहां पर उन्हें पता है कि किस तरह से वहां पर फ्रेम अप करना है और किस तरह से पॉइंट्स की तरफ बढ़ना है। ऑलरेडी प्लान अप कर आती है जैसे आपने बताया। बट उनके विरुद्ध एक और ऐसी रीडर का सामना होने वाला है जिन्होंने पंचाला प्राइड की तरफ से अपनी टीम के लिए प्राइड बनाई थी, वो थी रीनू, जिन्होंने भी एक शानदार सुपर 10 बनाया और उनके पास भी मल्टीपल स्किल्स और मल्टी फेसेटेड नजर आ रही है रीनू। Definitely, because Reenu was very good yesterday. But my worry today will be when Reenu goes in so deep towards the right. Because I'll tell you what, Himalayan Tars have a very good covers. Don't forget, there is Dimple who's going to come in. So she can't travel so deep today. So today, Reenu, as I said yesterday as well in the Yuva Live, the post-match show that we did when we were concluding the day, Reenu needs to come out with different skills. She can't keep traveling there. Harshit, she needs to move around. She needs to turn around. There's no much of footwork for Reenu. And Dimple would have seen this. From the right cover, she will come and take her over. So it's a big challenge for Reenu today. तो आज पूरी तरह से समझकर अपने फुटवर्क को बेहतर अंदाज में वहां पर प्रदान करना बहुत जरूरी होगा और उसी के बाद ही बुलंद मुकाबला आगे बढ़ेगा और ये ठोस मुकाबला आगे जाएगा। पर जो अभी कुछ ही मिनटों में हमारे दर्शकों के सामने आने वाला है वो है मैच नंबर 4 और 2 टीमें जहां मुरथल मैग्नेट्स से तो 5वें गियर में कल के मुकाबले की शुरुआत की थी। पेरियार पैंथर्स, क्या शायद डीजल इंजन है, थोड़ा समय लगेगा बट जब आएगा तो पूरी तरह से इन्फॉर्म होकर आएगा। Yeah, diesel is a diesel any day. So when it goes on, it'll be really nice. But we will be speaking to her itself, the captain who's always like a big force behind the energies that Murthal Magnets brings in. And yes, Priyanka, yeah, she's walking in. Priyanka, प्लीज आइए, दूसरे दिन में आपका स्वागत है और इस JSG विमेंस युवा कबड्डी सीरीज के बारे में पहली चीज एक नॉर्मल से आप बता दीजिए कि आप इस सीरीज के बारे में अगर जब आपको पता चला तो तैयारी आपका कैसे थी मन में? देखो, हमारे को इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने को मौका मिला और ऊपर से इतनी सीनियर खिलाड़ी और सभी जूनियर बच्चे हैं तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और ऊपर से हमारी थोड़ी सी तैयारी कम थी और इतना बड़ा टूर्नामेंट सुनने के बाद हम बड़े खुश हुए और एकदम से हमने अच्छी टीम बनाई और अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपके खेल देखने से तैयारी कम है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी आज अच्छा खेलिए। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, कैप्टन के बतौर
आपका जिम्मेदारी क्या है, मतलब मैट पे ज्यादा देर तक टिके रहना, क्योंकि हमने देखा है आपको हमेशा, जैसे कि अनूप कुमार करते हैं, मैट में ज्यादा देर टिके रहते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती आप स्ट्रगल में, कवर्स में खड़े रहती हैं, एक हौसला बना के रखती हैं टीम के साथ। सो आपका स्ट्रैटेजी मतलब दिमाग में कैसा है, मैट में ज्यादा देर खड़े रहना या स्ट्रगल में इन्वॉल्व होके पूरा मतलब रेडर को चौंका देना, क्या चलते रहता है आपके मन में? देखो वो स्ट्रेटेजी हम सबके सामने शो नहीं कर सकते, नहीं, बता सकते हैं कैमरा में। बात ऐसी है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, ऊपर से सबसे सीनियर खिलाड़ी हो, तो जूनियर बच्चे हैं सभी, तो उनके अंदर एक टीम में दबदबा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऑल आउट हमारी टीम ना हो, और जितने तक हम चाहेंगे कि हमारी टीम में ऑल आउट ना लें हम, तो मैं चाहती हूँ कि टीम के अंदर ही मेरा रहना जरूरी है। हाँ। और शायद वो पूरी करूंगी जो बिल्कुल। हमारी कोच ने बोला है वो हाँ। पूरा करूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपको, क्योंकि ऐसे एक सीनियर रहना चाहिए मैट के ऊपर, एक जो दिमाग है जो सोचे, मैट से सोचे, मैट से बाहर तो कोच साहब सोचते रहते हैं, लेकिन मैट में सोचना बहुत अच्छा है। और एक चीज आप जाने से पहले और हर्षित से पूछने से पहले, वो बैक होल्ड कल का वो प्लीज उसका वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि कवर्स में बैक होल्ड देखा मैंने, कतीजा को पकड़ा, लंबी रेडर है लेकिन मस्त पकड़ा आपने पीछे से। देखो ये तो कहना, हम मतलब एक कबड्डी है, कुछ भी हो सकता है इसमें, हम ये मानना है कि बैक होल्ड, एक बैक सूट था मेरा वो, तो मेरा कहना यही कि है उस टाइम पे उसने अपने बॉडी को स्टे किया, मैंने उधर ही बैक होल्ड किया उसको। मैं यही कहना चाहूँगी जो भी हमारा प्लानिंग है वो अच्छा ही करेगी हमारे लिए। हर्षित चाह रहा था आप बैक होल्ड उस पे दिखाओ एक बार। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पर जोक से बात, बहुत ही लाजवाब आप खेलें। थैंक यू सो मच प्रियंका हमारे साथ जुड़ने। बात बताई, कतीजा को जब उन्होंने बैक होल्ड किया तो वो पूरी तरह से उस सिचुएशन को देखा। मुरथल के लिए जो आपने बताया 15 वर्षीय खिलाड़ी, बट जो उनका कद है, जो उस प्रकार से परफॉर्मेंस दर्शा रही है, वो बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही अद्भुत था। और आइए निकिता की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं नवीन, बिना किसी इंतजार। Definitely, she's already been the top raider here from yesterday. She's been very good. This 4-pointer raid was just magnanimous. She just went in before that 4-pointer raid for a super raid, and then yeah, this was the Kabaddi Kamal moment, the 4-pointer raid where Palni Tuskers' comeback route was completely blocked and broken. So yeah, you need to watch out for Nikita. But again, what I'm going to tell is, again, you need to change your stance, because see, Nikita once again does not have the running hand touch. We did not see that yesterday. She does not travel towards the covers. She's a left raider. She needs to travel towards the covers, attack the covers more often. So probably if that can come in today, we will be nice, to see. We will be really happy to see that nice new skills are coming through from Nikita as well. और नवीन, मुझे आज लगता है क्योंकि कल पहला दिन था, कल कहीं ना कहीं नर्वसनेस अंडर लाइट्स, अंडर कैमरास थी, बट आज मुझे लगता है डबल डोज ऑफ स्किल्स नजर आ सकता है, डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट नजर आ सकता है, और ये वो खिलाड़ी लेकर आ सकती है ज्योति पेरियार पैंथर्स के लिए खासकर। काफी अच्छी रेडर नजर आई नवीन, ये भी, इनके पास भी वहां पर वो क्रम दिखाई दे सकता है, जरूर छोटा कद है, बट वो एजिलिटी और ये स्कॉर्पियन किक्स देखिए नवीन, ये सबसे पसंदीदा मोमेंट था मेरा कल का। This will be the lovely skill to escape, especially Priyanka's hold. Yeah. You know, when you are going against Priyanka, because as you said, Priyanka needs to be here, and Priyanka also accepted that, yes, I need to be here so that the team does not get the all out. So when she is having that sort of a back hold, Jyoti, she can escape nicely. So that is what she needs to be doing, and I'm sure you know what, today 1.5 eyes of Jyoti will be on Priyanka, Yeah. and the other half will be on the other defenders maybe. जी हाँ, तो एक बहुत ही कड़ा कॉन्टेस्ट अब आप सभी के सामने आने वाला है। क्या ज्योति के किक्स चल पाएंगी या फिर प्रियंका एक बार फिर से अपनी डबल टाई होल्ड और बैक होल्ड के साथ मुरथल को एक और जीत की तरफ ले जा पाएंगी। वी नेवर नो कि कबड्डी का खेल कैसे और कब पलट जाए, बट चलिए अभी हम पलटते हैं और बीसीआर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप सभी को दिखाने का समय हो चुका है वो एक्सक्लूसिव ऑन फैन कोड, एक बहुत ही शानदार मैच नंबर 4 मुरथल बनाम पेरियार। नमस्कार, स्वागत, टेस्ट कबाल आप सभी का। मैच नंबर 4 आपका इंतजार कर रहा है। जेएसजी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 मुरथल मैग्नेट्स जो अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ गई है। पेरियार पैंथर्स पिछला मुकाबला गंवाया जरूर है, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मगर याद रखिएगा, हर एक मुकाबला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस आपको मिलेंगे नहीं। तो कॉम्बिनेशन जिस टीम का पहले सटीक बैठा, वो टीम मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होगी, रेडर्स बनाम डिफेंडर्स की स्ट्रगल हमें नजर आएगी। अब आज की स्ट्रगल कैसी रहती है, लेकिन उसको पता करने से पहले दोनों टीम्स को मैच पे बुलाना पड़ता है। का सीधा सा मतलब है कि हर्षित के पास जाना पड़ता है। तो आइए, समय हो चुका है आप सभी को हर्षित के पास ले जाने का। Okay, it's the time for wonderful Wednesday. Match number 4 is coming. पहला दिन,
एक्साइटमेंट भरपूर दूसरा दिन तैयार हो जाइए डबल डोज ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट के लिए आ रहे हैं सबसे पहले सीधे 5th गियर में अटैक करने द टीम ऑफ मुरथल मैग्नेट्स। और मुरथल के कठिन प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएंगी स्वीता पटेल जी की ये टीम। आ रहे हैं द पैंथर्स पेरियर पैंथर्स। कबड्डी की जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफी सारी की है पढ़ाई और आज मैदान में जंग के लिए पूरी तरीके से होने वाली लड़ाई, वो महिला सशक्तिकरण जिसकी आमतौर पर हम बात किए करते हैं, उसका मौका आज आ चुका है। इन युवा प्रतिभा खिलाड़ियों को मौका मिला है अपनी क्षमताओं को दर्शाने का। मुरथल मैग्नेट्स इन्होंने क्षमताएं पिछले मुकाबले में दर्शाई थी जब एक बहुत बड़ी जीत पाई थी प्रियंका की अगुवाई में, जो कि आपको कॉर्नर कवर की पोजीशन पे नजर आने वाली है। तो राइट कवर के ऊपर प्रीति शर्मा है, मिडिल की पोजीशन पे निकिता को देखिए, उम्र बहुत छोटी है लेकिन कारनामे बहुत बड़े करने के लिए जानी जाती है। मनजीत मौर और सुनीता ये इनकी पोजीशन पे नजर आएंगी। तो राइट कवर के ऊपर रीतू, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर उनका साथ मनीषा सिंह निभाएंगी। वहीं पलक, मुस्कान, आरती, निकिता, उनके साथ में कविता, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब पे है, लेकिन जब कोच चाहेंगे तो इनको बुलाया जाएगा। फिलहाल समय हो चुका है मेरे साथी कमेंटेटर को बुलाने का। स्वागत है अर्षित। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। और आपने मुरथल मैग्नेट्स की टीम को बखूबी बताया। अब आइए बखूबी बताते हैं हमारे दर्शकों को पेरियर पैंथर्स की टीम कैसे आज नजर आने वाली है। फुरकाना को आज शुरुआती साथ में मौका मिल रहा है। आंचल और खुशी वहां पर कवर्स पर होंगी। खुशी को इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा आज अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक अच्छी खिलाड़ी है। कीर्ति और ज्योति की यहाँ अहम भूमिका इस मैच में इसलिए भी होगी क्योंकि ये मुख्य रेडर्स हैं अपनी टीम की। अवंतिका, आयुष, इस खिलाड़ी पर मेरी जरूर निगाहें ज्यादा टिकी होंगी क्योंकि आज लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ तनु सिंह निभाएंगी। अंजलि, राशि और बाकी खिलाड़ी वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट्स में नजर आएंगी। और यह है JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 पावर्ड बाय फैन कोड। आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और ले चलेंगे सीधा यहां पर बड़े क्रम की तरफ। और ये चमचमाती हुई लाइट जब चमक रही थी सिक्के की उछलने की हम बात कर रहे थे। और जब सिक्का उछल कर वहां पर पेरियर पैंथर्स के पक्ष में गिरा और चॉइस ऑफ कोच उन्होंने राइट हैंड साइड को मांगा, यानी कि पहली रेड निकिता लगाते हुए नजर आ सकती है आयुष हमें। और अक्षय देसाई ने बताया कि चलिए यहाँ पर टॉस जीत लिया पेरियर पैंथर्स ने, दूसरे आपके पहली रेड इन्हें लगाने का मौका मिलेगा। पर निकिता, आयुष, पिछले मैच में इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने जिस तरह से अपना कमाल और धमाल मचाया है वो बहुत ही शानदार था। कमाल के आंकड़े इनके, 85 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने वो रेड लगाई थी। 11 रेड पॉइंट कुल मिला के एक मुकाबले में कमाना। 15 वर्ष की आयु में हरियाणा से आना, हिसार की रहने वाली है। हरियाणा की रग रग में आपको कबड्डी नजर आएगा। तो दूसरी तरफ खेमे के अंदर ऐसी खलबली मचाने को पेरियर पैंथर्स भी तैयार रहने वाली है अर्षित। जी और रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आज मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल राउंड रॉबिन का फॉर्मेट है, सर्वाइवल राउंड यहाँ पर जारी है। और जब आप इस खिलाड़ी की बात करते हैं ज्योति की, एक मुकाबला इन्होंने खेला है, 8 रेड पॉइंट्स अपने पिछले मैच में अर्जित किए। रेड स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है 46.2। अब 46.2 को और आगे बढ़ाते हुए कैसे आगे बेहतर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, क्योंकि आपको टॉप गोल तो आपका यही होने वाला है कि आपकी टीम इस मुकाबले में जीते, खाता यहाँ पर खोले। बट यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है पेरियर पैंथर्स आयुष।
तो वहीं दूसरी तरफ मुरसल मैग्नेट का जो खेमा, जिनके सबसे सीनियर खिलाड़ी प्रियंका, उनका मानना यह है कि टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको बतौर राज के रखनी पड़ती है। का मतलब यह है कि वो राज अगले 30 मिनट में खुलेगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं काउंटडाउन की ओर। लाइव एक्शन और फास्ट। JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज पावर्ड बाय फैनको यूश। तो सुनीता नंबर 8 जर्सी मुरथल मैग्नेट्स के लिए पहली रेड लगाकर आप देखेंगी। और क्या मैं अंकित शारवा, रोहित राठी और मयंक सैनी का ट्रायो यहाँ मुरथल मैग्नेट्स की वुमेन्स एडिशन में भी नजर आएगा। पर सुनीता ने पहला अंक ला दिया है। स्वागत और शुरुआत यहाँ पर कर दिया है पेरियार का। किसानों की नगरी से आती है तो उनकी क्षमताएं जो है वो साफ नजर आई है। मेहनत करने से कभी कतराती नहीं है। शुरुआती पॉइंट अपने नाम निकाला। देखते हैं दोबारा उस एक्शन के अंदर कवर्स को आसान सा टच मार के शिकार बनाया। और वो जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम शुरुआती क्षणों में अर्चित नजर आई है पेविया पैंथर्स के खेमे में। बहरहाल अगली रेड लगाने के लिए आपको कीर्ति नजर आएंगी। मगर आप सभी को याद होगा एक बहुत पुरानी आवाज जो हम सुनते थे, नमस्कार भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों। फिलहाल यहाँ देखिए 10.5 निकाले हैं कीर्ति ने। 56 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रेड्स लगाई है और कुल मिला के 5 पॉइंट यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। मगर अब रेडियो की वो मशहूर आवाज श्रीमान अमीन सयानी जी अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है। 91 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो चुका है। ऊपर वाले से मनोकामना है कि बचपन के जितने भी साल उनकी आवाज सुनते हुए बीते, अब शायद वो अब शांति से उनको कुछ ना कुछ अच्छा वो वास मिले। शब्दों की थोड़ी सी कमी अर्चित मुझे फील हो रही है। बट आयुष बिल्कुल भावनाएं आपकी समझ आई। और यहाँ पर निकिता ने भी सम्मान किया उन भावनाओं का। यहाँ पर 2 अंक चुरा कर लेकर आई। अवंतिका को वहां पर शिकार बनाया। पहले लेफ्ट कवर आई थी खुशी, और खुशी को तो पूरी तरह से बुलडोज किया वहां पर आयुष। बहुत ही बेहतरीन अटैक वहां पर निकिता की तरफ से। और अवंतिका ने भी कोशिश पहले की थी, उन पर पहले वहां पर हेड टच हो गया था। बिल्कुल आयुष, अमीन सयानी जी जब हम किसी भी शख्स की बात करते हैं जो बहुत अच्छा बोलता है तो हम उन्हीं से वहां पर सीखते हुए नजर आए। स्ट्राइक रेट 62% का है। ज्योति का स्कॉर्पियन किक आ रही थी। पिछले मैच में इनके 8 रेड अंक थे, बट उस स्कॉर्पियन किक को पहले ही नलीफाई कर दिया राइट कॉर्नर के डिफेंडर ने। बेहतरीन अंक मुरथल मैग्नेट्स और शुरुआत में बहुत बड़ी लीड की तरफ बढ़ती हुई। कमाल का एंटिसिपेशन दिखाया। प्रेजेंस ऑफ माइनर पॉइंट देखिए आप, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर मौजूद थी, सीधे एंकल के ऊपर ज्योति के धावा बोला। अब सबसे बड़ी जो खिलाड़ी है पेविया पैंथर्स के लिए वो ज्योति है। यदि उनको मैच से बाहर निकालेंगे तो कप्तान प्रियंका के चेहरे पे ऐसी हंसी आएगी। क्या पेविया पैंथर्स ऑल आउट की तरफ धकेली जा सकती है? मंजीत मौत कॉर्नर को शिकार किया, एक और खिलाड़ी को मैच से बाहर किया। जर्सी नंबर 13 आउट। तनु भी वहां पर बाहर और सुमन जी खुश है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्टार्स जो आपको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नजर आता है और बहुत ही कंफर्टेबली वहां पर ट्रैवल किया। जानते थे कि इकलौती जो खिलाड़ी है वो वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद है। आज फुरकाना को शुरुआती 7 में मौका मिला है। 52% टैकल सक्सेस रेट और शायद सबसे बेस्ट टैकल सक्सेस रेट है ये। रेटिंग 4 स्टार है, बट ये 4 स्टार डिफेंस का यहाँ पर परफॉर्मेंस बिल्कुल 10 स्टार रहा है। प्रियंका सिंगल थाई होल्ड, फुरकाना को बिल्कुल क्लूलेस कर दिया और शिकार बना दिया। जाना पड़ेगा बेंच पर, पेरियार ऑल आउट की तरफ। कोई मौका नहीं दिया। हालांकि जब आपके स्टार्टिंग लाइनअप से थोड़ी सी कमजोर गलतियां होने लग जाए तो ओपोनेंट डिफेंस वैसे भी आप पे भारी पड़ता है। सिर्फ सिंगल थाई होल्ड के लिए गई थी कप्तान प्रियंका, हाथ फिसला, एंकल छोड़ी नहीं। मंजीत का भी सपोर्ट आया और कॉम्बिनेशन टैकल के चलते मुरथल मैग्नेट ने फुरकाना को भी बाहर किया है। लेकिन हमने एक चीज है जो बाहर बहुत सारी लगाई है, उन्हें वो पेड़ कहते हैं अर्चित, वो छोटे छोटे प्लांट्स कहते हैं। ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव के तहत युवा कबड्डी सीरीज की ये पहल ऑल आउट की तरफ जाने वाली पेविया पैंथर्स की आखिरी खिलाड़ी कीर्ति भी यहाँ सरेंडर करेंगी। जी हाँ, 3 और अंक अब यहाँ पर आते हुए मुरथल मैग्नेट्स ने अब ऑल आउट कर दिया है। और परेशानी का सबब पेरियार पैंथर्स, सुमन जी और उनके साथी वहां पर मैनेजर बहुत खुश हैं। इकलौती खिलाड़ी वहां पर कीर्ति बची थी। कीर्ति वैसे ही क्रेडर हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन वहां पर किया गया नहीं। तो
तो जो फंडामेंटल्स है ना कबड्डी के, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी पेरियार पैंथर्स का। मोमेंटम अगर मुर्तल के पक्ष में है तो उसे थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, और बहुत हाई लाइन खेल रहा है मुर्तल का डिफेंस, उसका फायदा उठाइए और वहां पर एडवांटेज लीजिए। और पेरियार पैंथर्स ने उसका एडवांटेज लिया, कीर्ति ने उसका एडवांटेज लिया और कीर्ति ने वहां पर पहला टच पॉइंट अर्जित किया। बट मुर्तल मैग्नेट्स के मैनेजर और कोच अभी भी नाखुश हैं। खाता खोला है लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे, बैक ट्रेल करने में थोड़ी सी गलती हुई। यदि आप मैट के ऊपर थोड़े से भी स्लो होंगे तो आपकी वो जो रफ्तार है उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं पूरी टीम को उठाना पड़ेगा। बहरहाल मुर्तल मैग्नेट के लिए इतना बड़ा मुश्किलात का सबब नहीं अर्शित, क्योंकि अच्छा खासा फासला उन्होंने बना रखा। 21% टैकल का सक्सेस रेट है जेएसजी वुमेन्स 2024 के संस्करण में पेरियार पैंथर्स का, जो कि बहुत अच्छा नहीं है और उसी के कारण उनको सिर्फ 1 स्टार मिला है। अभी सेटल नहीं हो पाया है इनका डिफेंस, अभी भी कुछ नए चेहरे हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं। जहां आप बाकी अन्य टीमों की बात करते हैं तो कुछ युवा खिलाड़ी हैं, कुछ प्रॉमिसिंग प्लेयर्स, और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे सेटल डाउन होंगे। बट बता दें कि सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा। फुरकाना यहाँ पर पहले प्रियंका ने उनपे सिंगल थाई दिखलाया था, अब मोमेंटम की बात होती है। पेरियार पैंथर्स क्योंकि खाता खोल चुके थे, सभी मेंबर्स उनके ऑन कोर्ट मौजूद थे, प्रियंका को बाहर दिखलाया गया है। और प्रियंका जब जब बाहर जाती है मुर्तल क्या परेशानी में आ सकती है आयुष? इंटरनेशनल प्लेयर है प्रियंका, अपना सारा एक्सपीरियंस लेकर आती है। तो यदि आप कवर्स के खिलाड़ी पे किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी को शिकार बनाते हैं का मतलब जहनी तौर के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ हरकत दिखाने की मनजीत मौर्य ने कोशिश की थी, तनु कॉर्नर की पोजीशन पे, चेन अभी भी पकड़ी रखी है, तनु को ही रनिंग एंड टच मारने की कोशिश की तो सामने से ज्योति फ्रंटल ब्लॉक दिखाना चाहा, मनजीत ने माफ कीजिए आंचल के उस एंटिसिपेशन को पूरी तरीके से फेल किया और एक और रेडिंग का पॉइंट अपने नाम किया। डबल डिजिट्स में मुर्तल मैग्नेट्स। यहाँ पर जरूर आंचल ने आकर जो है वो फोर्सफुली तो अपना काम कर दिया था, बट मंजीत ने क्या किया, मंजीत ने वहां पर अपने लेग्स का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए था वहां पर आंचल को। पेरियार पैंथर्स जो कॉम्बिनेशन टैकल्स का वो आइडेंटिटी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ गलती हुई है, रितु से यहाँ पर गलती हुई है, प्रियंका बाहर है, रितु बाहर है, तो डिफेंस के दो मजबूत। ये देखिए प्रियंका सिर्फ दूसरी बार आयुष सिर्फ दूसरी बार इस एडिशन में बाहर जाती हुई नजर आई है। पिछले मैच में बहुत समय तक वो अपनी टीम के लिए मैट पर मौजूद थी। कवर और कॉर्नर, ये वो कोऑर्डिनेशन जिसके आमतौर पे हम बात करते हैं। तो एक तो आपने राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर कर दिया, एक कप्तान को बाहर कर दिया। फुरकाना के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आई थी, क्योंकि बैक टू बैक पेरियार पैंथर्स की टीम ने पॉइंट निकालना शुरू कर दिया है। सुनीता अगली रेड के ऊपर कॉर्नर की पोजीशन पे से पॉइंट निकालना चाह रही थी, थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वहां पे फुरकाना जो है वो सोलो खड़ी है और वो कभी भी टैकल्स इनिशिएट कर सकती है। सरप्राइज टैकल आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में आती है। कवर टूटा नहीं है, संभल के खेल रहा है। पेरियार पैंथर्स जज्बातों में नहीं, अब इस मुकाबले को अपनी कमांड में ले रहा है। और क्योंकि 30 मिनटों का मुकाबला है, 15 मिनट हाफ और एक रिव्यू आपको प्रति मुकाबले दिया जाता है, 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू आपको प्रति मुकाबले दिया जाता है। समिट राउंड में हालांकि बदल जाएगा, वहां पर जाकर आपको 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू पर हाफ मिलेगा। यहाँ फुरकाना अब इनकी असल स्किल्स का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब थोड़ा सा डीप ट्रेवल करना पड़ेगा। 11-3 का स्कोर है। मुर्तल मैग्नेट्स के रीडर्स को टच पॉइंट मत दीजिए। पेरियार पैंथर्स चाहेगा कि थोड़ा सा पीछे खेलें, उतना हाईलाइन न खेलें, और जब एक डिफेंडर जाए तो सपोर्ट आए। प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपको वहां पर डिफेंस करना बहुत जरूरी है। खुशी कल जिन्होंने अच्छा डिफेंस दिखलाया था, क्या एस्केप रूट बनाया है, बिना चेन के वहां पर आ गई थी लेफ्ट कॉर्नर, और क्या एस्केप रूट बनाया है आयुष, मजा आ गया। क्या कट वहां पर लगाया, ऐसा लगा कि ट्रक को या फिर किसी बड़ी भारी गाड़ी को वहां पर ओवरटेक कर दिया हो। बहुत बड़ी गलती है ये तनु की, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। पेरियार पैंथर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात का सबब है ना हर्षित, वो यही रहा है कि उनका डिफेंस नहीं चला है। हालांकि रेडर्स ने भी बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं निकाले, कुल मिला के 3 पॉइंट आए। फुरकाना ने 2 पॉइंट निकाले थे, कीर्ति जो अभी रेड पे इन्होंने 1 पॉइंट निकाला था। मगर आपको कॉम्बिनेशन दिखाना है तो डिफेंस को भी चलना पड़ेगा। यदि आप मुर्तल मैग्नेट के रेडर को पॉइंट नहीं निकालने देंगे तो उनके डिफेंस में भी खलबली मचेगी। दोनों तरफ कीर्ति, एक तरफ जर्सी नंबर 3 जो राइट कॉर्नर पे है, तो दूसरी तरफ लेफ्ट कॉर्नर के सामने से पॉइंट निकालने का प्रयास करने वाली कीर्ति थी, जो नंबर 10 की जर्सी में थी, लेकिन फिलहाल एम्प्टी हैंडेड ही गई है। 12-3, 6 मिनट का खेल शीट बचा है इस पहले हाफ में। पेरियार पैंथर्स का डिफेंस, बट मंजीत आज निकिता, मंजीत, सुनीता 4 रेड्स, 3 टच पॉइंट्स, 1 बोनस पॉइंट। स्ट्राइक रेट 100%, 100% वहां पर रही है। मैच स्टैट्स की बात कर रहे हैं, और आयुष ये बहुत अच्छा है ना कि जेएसजी
वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज की जब हम बात करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मुरथल मैग्नेट से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कौन बाहर जा रहे हैं, कौन अंदर आ रहे हैं, यानी कि क्या मुरथल मैग्नेट्स अभी से ही वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को पूरा मौका देना चाह रही है। वहां पर सुनीता बाहर गई हैं और सुनीता की जगह यहाँ पर शायद पलक अंदर आई है। आयुष, पलक अंदर आई है और साथ ही साथ लेकर आई है डू और डाई की परिस्थिति। पेविया पैंथर्स की टीम भी अपने साथ रेड लगाने के लिए ज्योति कवर्स की पोजीशन से आते ही अपना कारनामा दिखाने की कोशिश की गई है। एंकल के ऊपर धावा बोला गया है और ये पॉइंट सुनीता ने अपनी टीम के नाम इंश्योर किया। क्या उन्हीं का पहला इंश्योरेंस था जिसको सब्स्टिट्यूट करके आपने किसी और खिलाड़ी को बुलाया है? क्या कोच की रणनीति ऐसी परिस्थिति में काम आई है? प्रियंका नीज के ऊपर गई, हाथ फिसले, लेकिन तब तक कीर्ति और बाकी खिलाड़ियों का सपोर्ट आया। हर्षित, हम ऐसे ही कह रहे हैं कि इन महिलाओं को जो मौका मिला है इसको बुलाना पड़ेगा, लेकिन आप याद रखिए कबड्डी की कब से कर रही है भक्ति, यही है भारत की महिला शक्ति। और बहुत भक्ति, जो आपने बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया, क्योंकि भक्ति का जो फल है वो आपको कड़ी भक्ति के बाद मिलता है। इस बार खुशी को यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा। खुशी भी अच्छी डिफेंडर है, बट आपकी अटैकिंग स्किल्स अच्छी हो, बट उतनी अच्छी आपकी बैकटेरियल स्किल्स भी होनी चाहिए। और उसी का टेस्ट वहाँ पर क्या क्या बात है। डबल स्टेप लिया, उसके बाद रीच को और बढ़ाया, अंदर जाकर डीप में ट्रैवल करने के बाद वहाँ पर टच पॉइंट लेकर आया। तो मुरथल मैग्नेट्स का खेमा बहुत ही अद्भुत अभी तक परफॉर्मेंस दिखला रहा है आयुष। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत पेविया पैंथर्स की है ना उनके रेडर्स पॉइंट ला रहे हैं, ना उनका डिफेंस ने कुछ किया है। एक तरफा होता जा रहा है ये मुकाबला, और ऐसी परिस्थितियों में आप चाहते नहीं है किसी भी टीम का शेयर डोमिनेंस दिखेगा। मुरथल मैग्नेट्स का दिखेगा, मनीषा सिंह का दिखेगा। फ्रंटल ब्लॉक के लिए चली गई थी, पोजीशन थोड़ी दाएं बाएं रेडर और डिफेंडर के बीच में चहलकर भी थी, कुछ गर्मा गर्मी थी और आखिरकार उसमें अपने आप को विजय पाया। नंबर 12 मनीषा सिंह ने कॉर्नर की पोजीशन, फ्रंटल ब्लॉक, मोमेंटम के खिलाफ भिड़ना कभी भी आसान नहीं होता। बिल्कुल सीधा भागते हुए चली गई थी, पैरेलल भागते हुए वहां पर चली गई थी। और अब देखते हैं कि निकिता इस बार रेड पर आई है। 3 का हाउस है, सुपर टैकल अभी तक हमें शायद एक भी देखने को नहीं मिला है, और अभी यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। एक और बार राइट कॉर्नर का अटैक आया, साथ ही जो डिफेंडर थी जो लेफ्ट फ्लैंक से आ रही थी, उन्हें डायरेक्शन को बदलने से पहले ग्रिप बनाना बहुत जरूरी था, और न ग्रिप बना पाई और न ही वहां पर डायरेक्शन को बदल पाई। अवंतिका एक अच्छी डिफेंडर हैं, बट उन्हें समझना पड़ेगा कि कब अटैक करने जाना है कब नहीं। निकिता 2 और पॉइंट्स। आप चाहे किसी भी एक खिलाड़ी का नाम लेते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अर्षित की डिफेंस तो पूरी तरीके से सहमा हुआ है। पेविया पैंथर्स को समझ ही नहीं आ रहा। कीर्ति पिछली बार भी ऑल आउट की पोजीशन में थी, तब डिफेंस कर रही थी, बाहर जाना पड़ा। यार रेड लगाने के लिए आई थी, बाहर जाना पड़ा। लेकिन ऑल आउट के 3 पॉइंट मुरथल मैग्नेट को पहले भी मिले थे, अब भी मिलेंगे। इस मुकाबले के शुरुआती 15 मिनट में 2 दफे पेविया पैंथर्स का सुपड़ा साफ हुआ है। कीर्ति यहाँ पर पहले बोनस चढ़ाने का प्रयास, बट आप रीतू का एंकल होल्ड देखिए, जिस तरह से राइट कॉर्नर के तौर पर एक शानदार एंकल होल्ड वहां पर नजर आया। जरूर सोनू राठी वहां पर लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे, यहाँ सोनू राठी के एंकल होल्ड की याद आ गई, रिवर्स एंकल होल्ड जिस तरह से वो कहते हैं। पलक दोहान यहाँ पर रेड पर आई है, अच्छी हाइट है पलक दोहान की, और 11/8 का ये मैट है। बता दें हमारे दर्शकों को, पलक दोहान क्या अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेच करते हुए हैंड से टच कर पाई हैं, शायद नहीं। बोनस के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना होगा पलक को। सोनीपत हरियाणा की रहने वाली पलक अपनी पहली रेड लगाने के लिए आई थी इस संस्करण में, एम्प्टी हैंडेड वापस जाना पड़ा। लेकिन यहाँ फुरकाना लगातार रेड लगाने की कोशिश है जरूर। ये प्रियंका की गलती कैसे हुई? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी ने इतनी आसानी से पॉइंट कैसे कमा दिया? कवर्स की पोजीशन से आई जरूर थी, लेकिन किया कुछ नहीं। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। चाहे जिंदगी हो या कबड्डी के मैच, जब भी आप दोहरे हार्ड के साथ जाएंगे आमतौर पे मुश्किलों में पड़ जाएंगे। और मैं सिर्फ फुरकाना की स्किल्स की भी तारीफ करूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाया आयुष कि मैं बोनस के लिए ट्राई कर रही हूं, और उन्होंने ऐसा वहां पर फेक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट जैसे ही उन्होंने आते हुए देखा प्रियंका को, सीधा वहां पर मोमेंटम के साथ जो है बढ़ाव कर दिया, कहां पर मिड लाइन के पार। और प्रियंका को पता है कि उनका रिवाइवल बड़ा जल्दी आ जाएगा, और प्रियंका इसलिए भी इतने प्रयास कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि लीड बहुत अच्छी खासी है। बट जो परफॉर्मेंस मंजीत, निकिता, सुनीता, पलक दर्शा रही हैं, वो बता रहे हैं कि रेडर्स की कोई कमी मुरथल मैग्नेट्स के पास रहने वाली नहीं है। कोई दोहराया नहीं है उसने।
चाहे रेडिंग डिपार्टमेंट हो चाहे डिफेंस हो, पिछला मुकाबला भी जो मुरथल मैग्नेट ने खेला था बड़े मार्जिन 45-23 से जीता था और इस बार भी कवर टूटा है, एंकल इस बार भी पकड़ी है, फुरकाना इस बार भी बाहर गई है। मुरथल मैग्नेट्स का डिफेंस दहाड़ रहा है, रेडर्स को पूरी तरीके से चकनाचूर निस्ते नाबूद कर रहा है। फुरकाना बाहर और थोड़ा सा वहां पर क्या निगल आया है, थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद यहाँ सही समय पर हाथ को बाहर निकालना बहुत जरूरी था, पर क्या ताबड़तोड़ एंकल होल्ड नजर आ रहे हैं, क्या जद्दोजहद वहां पर आपको नजर आ रही है। सिर्फ 1 मिनट से कम का समय चेंज बचा है, अंदर 30 सेकेंड ही मुकाबला पहले आप में जा चुका है और पेरियार पैंथर्स को 15 मिनट में कितने अंक मिले हैं? सिर्फ 5 और मुरथल मैग्नेट को 23 प्लस शायद 2 और 25 अंक मिल जाएंगे। अवंतिका भी बाहर गई हैं, तो पेरियार पैंथर्स का डिफेंस तो सेटल ही नहीं हो पा रहा है। आयुष, तनु भी बाहर, दोनों कॉर्नर्स बाहर, 13 और 8 नंबर जर्सी। गेम में चल क्या रहा है ये पहचानना मुश्किल हो गया पेरियार पैंथर्स के लिए। शुरुआत से लेकर अब तक जो दबाव बनाया मुरथल मैग्नेट के रेडर्स ने, उनके डिफेंस ने, उससे उभरने में मुझे लगता है कि ना जाने कितने दिन लग जाएंगे पेरियार पैंथर्स के खेमे को। बहरहाल इस मुकाबले के जो हाफ है उससे पहले की आखिरी रेड कीर्ति रेड लगाने के लिए आई है। आज का ये मुकाबला मिला जुला सा संघर्ष रहा है कीर्ति के लिए। पेरियार पैंथर्स के लिए सिर्फ 1 पॉइंट निकाला था और ये दूसरा है, ये प्रियंका की गलती है। सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल हर्षित यदि किसी खिलाड़ी ने किए हैं मुरथल मैग्नेट के लिए तो वो उनकी कप्तान प्रियंका है और उन अनसक्सेसफुल टैकल्स की संख्या 3 है। और नंदिनी जी यहाँ पर बिल्कुल अपने स्वैग के साथ, इनका एक अलग एटीट्यूड है और बहुत ही अच्छा ग्रो किया है उन्होंने, बहुत ही इंप्रेसिव वहाँ पर ऑफिशिएटिंग की है। और पिछले विंटर एडिशन की बात करें तो बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ द एडिशन रही थी वो, विंटर एडिशन की सर्वश्रेष्ठ वहाँ पर टेक्निकल ऑफिशियल रही और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं नंदिनी जी को भी उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। बट अब पेरियार पैंथर्स का ब्राइट फ्यूचर क्या मैच में बन पाएगा ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 6 अंक मिले हैं पेरियार पैंथर्स को और टैकल का तो खाता खुला ही नहीं है। जितने पेरियार पैंथर्स को रेड में पॉइंट्स मिले हैं उतने मुरथल को डिफेंस में अंक मिले हैं आयुष, और 4 ऑल आउट पॉइंट्स, 15 रेड पॉइंट्स। अगली प्लेट जब आएगी तो वहां आपको समझ आएगा कि पेरियार पैंथर्स के डिफेंस ने कितनी बार प्रयास किया है और कितने एरर किए हैं। रेड में मनजीत मौर्य ने कमाल बचा दिया, 6 रेड पॉइंट कुल मिला के निकाले, लेकिन वो जो सक्सेसफुल रेड के आंकड़े देखेंगे तो रेड दोनों टीम के खिलाड़ियों ने 14-14 लगाई है, सिर्फ 2 अनसक्सेसफुल रेड रही है मुरथल मैग्नेट के खेमे में, बाकी सारी रेड्स में उनको सफलता मिली है। तो दूसरी तरफ पेरियार पैंथर्स आंकड़े अच्छे नहीं है, वहीं टैकल्स को देखेंगे तो आप भूल जाना चाहेंगे इन आंकड़ों को, 13 में से एक भी सक्सेसफुल टैकल नहीं, वहाँ 6 सक्सेसफुल टैकल कुल मिला के लोग 11 इनिशिएट की थी मुरथल मैग्नेट को मिली है। डू और डाई की परिस्थिति एक बार आई थी और उसमें भी पेरियार पैंथर्स पार नहीं पा पाए, तो बोनस के आंकड़ों में भी 2 बोनस पॉइंट निकाले मुरथल मैग्नेट ने। हालांकि उससे कहानी हिमालयन थॉर्स कौन बन सकता है आज इस पंचाला के लिए गेम चेंजर? आ रही हैं पुनीता की अगुवाई में द टीम ऑफ प्राइड पंचाला प्राइड। In the blue jerseys is Panchala Pride. Yesterday they had a good match. Today it's a big challenge as the umpires walking in to take the center stage. It's against Pushpa and Bhavna, where the Panchala Pride will be facing up. As I said, Jyoti Kumar and Champa Thakur in the corners, Kiran Thakur, Bhavna Devi and Kritika in the raiding department. But don't forget, Pushpa is that all-rounder who will be actually raiding in along with the Kritikas and the Kiran Thakurs and the Bhavna Devis, right? So that's the combination. They've got the 4 raiders set up probably, and Dimple Rampal becomes that one good defender in the right cover. Tanu Thakur, Kavita Suresh, Riya Mehta, Divya Jyoti and Vandana Kumari will be in the substitution along with their coach
course, Satvir Kaur. And alongside with me in the commentary box is Harshit. Hi, Harshit. Hi Naveen और पंचाला प्राइड की टीम मैच और इत्मीनान का भरा ये मुकाबला हो सकता है। दोनों ही टीमें एक अच्छी शुरुआत देना चाहेंगी। Right, very much, as Panchala Pride will be going in for that victory as well, because today it's not going to be easy as it was yesterday for them. It was fairly an easy game, and today it's definitely a little tougher as Sagar Panchal flips the coin over, and it's Pushpa who will take the coin away. As Himalayan Tars, of course, want to just take the coin and take the court as well, and the first raid will happen in from Panchala Pride. Yeah, definitely 67 is the rate strike rate. That's what they want to really maintain upon, the Himalayan Tars alongside with Pushpa, as JSG Women's Yuva Kabaddi Series has already got a star, I should say, in the name of Pushpa Rana Jaipur, as Renu will be another force to reckon with alongside with the Panchala Pride's team, because they will want to go away and make sure that they will want to raid together as a very good unit. 65 is the rate strike rate. पास के यहाँ पर रेट स्ट्राइक रेट है। एक मैच जो वहाँ पर इन्होंने खेला है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखलाती हुई नजर आई है, और पूरी टीम जो है हिमालयन थार्स की बहुत ही शानदार टीम आपको नजर आती है। Definitely, and especially that combination of Pushpa, Bhavna, Dimple. So how will the Panchala Pride go ahead and face that challenge? Let's go to the countdown and get this match underway. Yeah, let's do this. Here we go. Just part two. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kabaddi. As Dhanushree will give the go-ahead for Panchala Pride's raider for the first raid, and Renu will be walking in. Is it? No, it's not Renu. Right, surprising. Should have started with Renu. They've started with Punita now. Generally left corner defender. But again, as I always keep saying, oh, she's got a bit of a niggle. First raid, and probably she just held her knees together. Right, so generally, Harshit, as we know now, probably in the second day, that there is no proper position, especially when it comes to women Kabaddi. They can raid, they can defend as well. 52% raid strike rate for the Himalayan Tars, all thanks to Pushpa. And see how they have started now without Pushpa as well. So first goes ahead there, Jyoti, again an empty raid. So 2 empty raids to start off. जी हाँ, ज्योति की तरफ से इस बार वहां पर रेड आई थी, और पंचाला प्राइड के लिए पहली रेड पुनीता ने लगाई। जरूर थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने पूरे हाफ में सिर्फ एक ही रेड लगाई थी। वो पहले हाफ की अंतिम रेड थी, जहां पर वो 4 अंक लेकर गई थी। बट इस बार निकिता वहां पर मौजूद है। निकिता को आज खेलने का मौका मिल रहा है। उर्तल मैग्नेट्स की निकिता की हमने बात की थी पिछले मैच में, जिन्होंने एक ऑलराउंडर के तौर पर रेड में भी, डिफेंस में भी अच्छा किया। यहाँ पर 3 एम्प्टी रेड्स नजर आ चुकी है, एक हिमालयन थार्स से, 2 पंचाला प्राइड से। बट नवीन, मुझे अब लगता है कि खाता अब खुल सकता है। 12 रेड्स इन्होंने पिछले मैच में लगाई थी, 8 टच पॉइंट्स मिले थे, 2 बोनस के अंक मिले थे। And I think it's a super raid, baby. Bonus +2. Yeah, there we go. It's a first super raid of this match. Fabulous start from Pushpa Rana. And that is what she always comes ahead with that vengeance and that resilience. Look at this. First the bonus attempt, and then the left corner Punita goes in. Right cover says, okay, Pushpa, take a super raid. And now it's going to be a do-or-die raid for Panchala Pride. 2 empty raids already. And Sonali now walks in for a do-or-die raid. And what's happening here, Ashrit? Renu, where is she?
We were just probably thinking what is wrong, but Champa completely making a mockery of it, wanting to block from the left corner, and in a do-or-die raid, Sonali brings up 2 points. Along with Champa, even Bhavna goes. Where was Bhavna coming in from? जैसे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन पर वहां पर भावना मौजूद थी और उन्होंने पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास किया और उसी में सोनाली वहां पर इजीली निकली और 2 पॉइंट वहां पर अपनी टीम के लिए शुरुआत की। तो इससे पहले 3 एम्प्टी रेड और पिछली 2 रेड में 5 अंक वहां पर आए हैं। 32% टैकल सक्सेस रेट रहा है और 3 स्टार ऑफ डिफेंस अभी तक कहेंगे, बट सिर्फ एक मैच में यहाँ पर ऑब्जर्व करना डिफेंस को थोड़ा जल्दी मानता हूं मैं। आशा करते हैं कि आज जिस तरह से ज्योति, पुष्पा और भावना के विरुद्ध पंचाला प्राइड का डिफेंस खेलेगा वो शायद एक ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि इनका डिफेंस कितना मजबूत है या फिर और मजबूती ने लानी होगी। Of course, she got that bonus point there, Jyoti. Yeah, see, Panchala Pride, they need to first understand not to attack Pushpa so much. And now see Pushpa again, she's playing on that left corner already. And now Nikita Ranbir comes in, she gets another couple of points. Pushpa also should probably go, I think. Yeah, it looks like they're still discussing about this number of points. 1 point and Jyoti and Kiran. Right, should have been Pushpa as well. I felt Pushpa came in. Let's see what just happened. Yeah, that's a super raid. It's a 3-pointer raid for sure. Yeah, there you go. That's a confirmation. Pushpa also needs to go. Right, Harshit, somewhere, just eating carrots, still working out for me. You can see something which the lenses can't probably capture. Look at this. First, Kiran goes in from the right corner. And then it was there, Jyoti, and then Pushpa. Before even the hands went through. So somewhere, Nikita Ranbir, right, she's proving it to be a very good raider. Suddenly, Panchala Pride in the lead after Pushpa's super raid. There's nothing more that they can really enjoy upon. So I think Ranbir as a name in 2024 is looking good. And also the tackle comes in. Panchala Pride's first tackle point. And Renu assisting in the tackle now. टैकल यहां पर आपको नजर आया। सबसे पहले राइट कॉर्नर की तरफ से अटैक आया और साथ ही साथ लेफ्ट कवर का बहुत अच्छा सपोर्ट आया। जरूर यहां पर कुछ वार्तालाप जारी है। सागर पंचाल ने अगर सबको बुलाया है तो हो सकता है कि कुछ वहां पर आश्चर्यजनक निर्णय भी आ जाए। Yeah, definitely. No doubt about that. As Sonali turned the pages, was very nice on that occasion. But then Renu coming in and changing directions was good. They're probably checking if any defender. Yeah, raider out and one defender out of bound. That's the whole problem. That's the whole problem. Who's going out is a question from Panchala Pride. I think they want to review this. Right. Don't take it against Sagar Panchal. Yeah, it's a review for the Panchala Pride. Please go. TV umpire, Panchala Pride challenges. Only raider out. RDC on 1 point each. Please review. और नवीन, ये क्योंकि पहला रिव्यू है आज के दिन का, इससे पिछले मुकाबले में हमने कोई रिव्यू देखा नहीं था, तो चलिए रिव्यू को उपयोग करना तो आ रहा है, ये एक अच्छी चीज है। बट क्या यहाँ पर रिव्यू जो है सही लिया गया है? टर्निंग द पेज अराउंड जो आपने कहा, क्या कहीं पैर वहां पर रीनू का हवा से कांटेक्ट में आया था और लॉबी से कांटेक्ट वहां पर छूट गया था? Doesn't look like if she's bounced off from the lobby. Doesn't look like it. But all the more interesting that they have gone in for the review against Sagar Panchal and the decision. So Kalidas, the TV umpire, probably will take another look at it. And yeah, you just mentioned it right. Sagar, whenever he brings on, there is something or the other that's definitely happening. I'll tell you what, today morning as well, he called everybody of us after the breakfast, after the little workout. And we got that lovely breakfast, I should say. Definitely those egg whites and milk. And Sagar today, okay, let's watch this first. Alright, it's not Renu. Probably there is a contention of, I think Priya Singh maybe, number 11, going out or bouncing off. Yeah, I think Priya Singh. Probably that might be the whole contention, but they're having Sonali Sherawat. 1 point each. Sonali Sherawat has to go back. Yeah, as mentioned, don't challenge against the decision or the conversation that happens in between the mat. So somewhere I think Sonali Sherawat was pushed away and then she lost the contact completely outside the lobby. I think Jyoti turned the pages so hard that it put Sonali completely off the mat. But yeah, I'll tell you what, Sagar today on the
decision lines in Kabaddi mat is very correct. Super tackle situation. Reenu comes in. First straight for her. She's touched the cheeks. I think there. It's a small little cheek touch. No, she wants to go back and check it out again. No, nothing out there. She will go back. Champa Thakur escaping that one. And today, Harshit, he was confused, Sagar, whether it's Tuesday or Wednesday. Because I was eating egg happily. Sagar was not taking egg. Listen, Sagar, we had such a nice workout. We ran in there. We came back for the breakfast. Nice egg whites and milk. Wow, a lovely thick milk. Of course, without sugar. Nice raw thick milk, hot boiling. I was enjoying it. And Sagar was thinking today is Tuesday, but today is Wednesday. But for Reenu, whether it's Dimple, whether it's Wednesday, it's that first point for her. इट्स हर डे। और एक और बार बहुत अच्छा अटैक किया वहां पर, राइट कॉर्नर की दिशा में थोड़ा ज्यादा अंदर चली गई रीनू। और देखिए पहली अटेम्प्ट में जब टच नहीं हुआ उसके बाद वापस थोड़ा सा अंदर गई, क्योंकि वहां पर जो लेफ्ट कॉर्नर की डिफेंडर थी वो ज्यादा वहां पर फियर अप नहीं दे पाए। और रीनू अच्छा फिजिक इनका नजर आता है जब आप एज ए रेडर की बात करते हैं। एज ए बिल्डअप बहुत अच्छा है, बट पुष्पा के बाहर जाने से, वो सुपर रेड आने के बाद से हिमालयन ताज मैच में थोड़ा पीछे गई हैं। चंपा इकलौती खिलाड़ी वहां पर बची है, कोई सब्स्टिट्यूशन वहां पर किया नहीं गया है। और चंपा एक डिफेंडर हैं, बट इतनी हाई किक नवीन, बहुत ही अच्छी एजिलिटी नजर आती हुई। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, मार्शल आर्ट्स में ऐसी हाई किक्स देखते हैं, या फिर आप जूडो कराटे की जब बात करते हैं। बट यहाँ सिंपल फंडामेंटल ऑफ कबड्डी, एक अच्छी डाइव और एक अच्छा अटैक। हिमालयन ताज ऑल आउट, पंचाला प्राइड 10 और 5, या फिर बोनस का एक और अंक हो जाएगा तो 6 पर पहुंच जाएगी। Who knew, who expected that the Himalayan Tars would be pushed for the first all out? My God, this is a little shocking. And against everybody's expectations, Panchala Pride going out there and getting the all out under their belt. Punita with the diving double ankle hold. Let's go back to see that once again. Yeah, there, Champa, good, nice kick, good agility shown, but the double ankle hold from Punita. And the others did not have to do much. Wow. So, to start off without Reenu is worked out, and now once again Ranbir comes in. As Nikita Ranbir, she started off well with that super raid. And that was a raid where Pushpa actually went out and never got revived, Arshit. So that to revive Pushpa, right? That is some big revelation that's happening. And now she's just walking with some aggression. She cannot take this down very sweetly. She will probably come out all guns blazing and attacking. But loophole, no second raider. जी हाँ बिल्कुल, भावना भी वहां पर डिफेंस करती हुई बीच में बाहर गई थी, पुष्पा फिर वहां पर डिफेंस करती हुई बाहर गई। और पंचाला प्राइड की डिफेंस ने इस बार अच्छा कार्य किया कि पीछे रहे वहां पर। टच पॉइंट अब पुष्पा को नहीं देने, क्योंकि अब हिमालयन ताज थोड़ा सा ईगर होकर पॉइंट लेना चाहेंगे। सोनाली इस बार रेड पर है, अच्छा ट्रायो पर। You see from the left cover, Pushpa comes in and just drags her back. And then she needs to go out there and raid. No, it's too much of a workload, I'll tell you that. See, I know Pushpa is a superstar. She can do all the things, whether it's raiding or defending, but it'll take me back to my firm belief that the workload needs to be shared. After just a tackle now, you've spent all the calories and now you've come there. Thankfully had the running hand touch on the right corner because it was a little slow from Sunaina to go back. But just imagine if Pushpa would have been tackled down. Just after spending so much calories, Panchala Pride should have understood that she would have been huffing and puffing over, and look at that where she's got it, Arshit, on the balk line. So they have not allowed her to come inside. So they should have allowed her to come inside. They should have actually made her run around. They should have actually made her, take more breaths and, just make sure she loses lots of energies and lots of, vitals, and then make her go back empty-handed. So this Kabaddi, as we always keep saying, is also played with a lot of jehen. So that is where Panchala Pride just missed out on that opportunity. जी हाँ, बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से मेंटल स्ट्रेंथ के साथ वहां पर मैच पर आते हैं, किस तरह का आपका मनोबल वहां पर रहता है। यहाँ एक बार फिर से जद्दोजहद जारी है। He's asking whether it's Tuesday or Wednesday. That's for sure. Sagar Panchal is still believing today is Tuesday. No, Sagar, today is Wednesday. You could have eaten eggs today, my friend. Come on. Even I was confused. After eating, I'm like, is it Tuesday or Wednesday today? Because see what happens, when you travel, actually generally outside house and outside your city, you don't get to do your regular workouts. You just get to do some cardios. So what happens to me, I keep the days in my memory with Monday shoulder, Tuesday lats, Wednesday chest. So that's the day. That's how I remember my days. And today, because we just did cardio and came back, Sagar confused me. He confused Akshay Desai as well.
saying today is Tuesday, you don't have to eat egg. So I think now he's just discussing. Yeah, jokes apart, I think there's something else that he's discussing. But I haven't still revealed it to him, that it was Wednesday today. But this raid, the super raid from Nikita Ranbir, fabulous it was. No point whatsoever there for Pushpa to go out there and try and dash her from the left corner. She wouldn't have done it any which ways, as Bhavna now gets ready. Probably her first raid for Bhavna to come in. और निकिता को हमने उस रेट पे देखा, जैसे हम सैक रेस में कहते हैं ना कि फोर्स आपको लगाना पड़ता है, वो जमीन से उछलना पड़ता है, और उसी प्रकार से फोर्स को इवॉल्व किया और अच्छी तरह से वहां पर बचते हुए नजर आई है। और अगर पुष्पा और भावना को आपको मैच में आने का मौका देना है तो आपको पीछे रहना होगा, अन्यथा वहां पर रीनू का शिकार यहीं बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा अटैक किया, कितना तेजी से नवीन देखिए, अभी तो रेड वहां पर शुरू हुई थी, रीनू राइट कॉर्नर पर खड़ी थी और पीछे नहीं ले जा पाई अपने आप को। And I think they should slowly get it into their system. Nikita Ranbir once again comes in, but what they should get into their system is play raiders as raiders, play defenders as defenders. Probably now that should be the way forward, or that should be the big aage ka rasta that I will probably tell the women kabaddi players here, because it is not very well defined. Very clearly, there is no definition of defenders and raiders doing their bit as we have it in the men. So see Reenu going out there, and Nikita Ranbir wants to go out there for the tackle. So just that one tackle, and now you've spent that energy, now you need to go back and raid as well. Jyoti was not turning, it's okay, but why is Nikita Ranbir getting involved in the tackle? Of course, it was a surprise tackle probably from the in position, but only 4 defenders on the what they are already used to play. This is women Yuva Kabaddi series, and this is like the JSG, the big one. So they need to understand, Arshit, raiders only keep raiding, defenders keep defending. Sonali was just been brought in from the bench. She was thrown into the grinder for the do or die raid, and it was a simple task at left corner. जी हाँ, बहुत ही आसान सा टास्क था वहां पर। चंपा ठाकुर शायद वहां पर मौजूद थी, जैसे ही सोनाली थोड़ा सा अंदर आई, एडवांस टैकल था, बट वो ग्रिप देखिए, दोनों थाइज, दोनों नीज को जिस तरह से पकड़ लिया था। और पिछली 2 रेड्स में 2 डिफेंस को अंक मिले हैं, एक हिमालयन तार्स को मिला है और एक पंचाला प्राइड को मिला है। बट पंचाला प्राइड से नवीन, पंचाला प्राइड और इनकी कहानी तो हमने पिछले विंटर एडिशन में देखा था। करमवीर ठाकुर, मोहित शर्मा और हमारे सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस अंकित, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इनसे टैकल किए थे। यहाँ कॉर्नर वहां पर भी परेशानी था, यहाँ भी थोड़ा सा परेशानी का सबब है। निकल जाएंगी भावना और यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा यश्मीन को। Yeah, once again the angle of attack. You don't have to attack when the raider is just on the balk line. You need to understand that small little strategy. Bhavna once again showing that aggression, and for the first time the scores are level. Yeah, Panchala Pride, as you clearly mentioned, Karambir Thakur. I think Ankit rubbed it to everybody, to Karambir Thakur and to the others, saying you can attack from the in position. You speak of attacking from the in position, left in. Bhavna did not have any work to go out there and make that blunder. Unnecessary. और रवीन, हम इसी की बात कर रहे थे ना कि धीरे धीरे आपको आपके बेसिक पर स्टिक करना ही होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सा पॉइंट, और बड़ी जल्दी आकर उन्होंने कमिट कर दिया और बहुत पहले दिखा दिया था रेडर को। बट निकिता रणबीर एक ऐसी स्टार बन सकती है पंचाला प्राइड के लिए आज, और एक अच्छा टफ बैटल वहां पर चल रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें कल जीत कर आ रही है। हिमालयन थाज ने मजबूत अरावली को वहां पर पटक दी थी, और पंचाला के भी एक टफ मैच था, बट पुनीता से इस बार गलती हुई है। यहाँ पर रिवाइवल मिल जाएगा, और यहाँ एक बार फिर से ज्योति को पॉइंट मिला है। स्कोर फिर से बराबरी पर, टस से मस नहीं हो रहा ये मुकाबला। Again, see Punita, the problem as a captain, she's attacked. They need to always understand and think about. See, Nikita Ranbir is walking in once again with just 12 on the board for both of the strong teams. But the problem is, who needs points? And when you understand who will need points, that's a good tackle from the right end, Jyoti from Nikita, but she just could not reach out towards the midline. Nice support from the right corner. That was good from Kiran. But Ashit, as I keep saying that, who needs points? That's what the defenders should think. When you understand who needs points, whether it is our team or the opponent, the defense should understand that, listen, we don't want the points now and we don't have to go out there and attack. Now see, this is a super tackle situation. You don't have to go out there and attack Pushpa, and you can't even let her go easily like that. That's very easy.
जी हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ वहां पर कि पहला कब हमें सुपर टैकल नजर आएगा। प्रांजल इस बार मौजूद थी और प्रांजल देखिए, जब आपके पास इंटरनेशनल रेडर कैलिबर वहां पर और एशियन गेम्स हो या फिर आप कह लीजिए भारत की सबसे बेहतरीन रेडर्स में से एक है, जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही हैं और लगातार आयाम कमा रही हैं। पुष्पा इजीली गई है, प्रांजल सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बचाना चाह रही थी, बट उन्हें शायद पहले से पता था कि इजीली पॉइंट ले जाएंगी। बट अब 14-12 का स्कोर है। सोनाली के पास मौका होगा कि रिवाइवल लेकर आ पाए, क्योंकि वुमेन्स में हमने देखा है कि हमेशा एक रेडर के पास मौका होता है कि आप कभी भी सुपर रेड वहां से मुकाबला जो है बहुत ही ज्यादा अटल बना दिया है, ऑल आउट शायद दे दिया है। जरूर यहाँ पर कुछ चर्चाएं जारी है। सागर पंचाल थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहते हैं, पर ज्योति किक लगाना चाहती थी शायद, सुने ना। ज्योति पूरी तरह से पहले ही तैयार थी कि जैसे ही वहां पर आएंगे वहां पर पूरी तरह से तैयारी कर ली होगी। अच्छा अटैक किया वहां पर ज्योति ने, बहुत ही अच्छा अटैक किया। सिर्फ इकलौती खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। अभी भी कुछ कंटेंशन जारी है, कुछ यहाँ पर चर्चाएं होंगी। क्या ऑल आउट रेडर सेफ दिया गया है नवीन? I think they want to go out there and review this one maybe. Yeah, they will go for it. Definitely they will review this one. Himalayan Tars. There's some issue out there. They're saying Raiders safe. By Sagar once again. But the only factor is for me, who was that defender who's just been sent out? Jyoti was there in contention. Nice attack from the right end. Jyoti came in. Jersey pulling maybe. That's the only thing. Apart from that, it wouldn't have been anything else. Yeah, of course you had Kritika coming in and pushing away, but this is a very, very big boon that has come via a disguise of jersey pulling. Yeah, that's it. Kalidas, the TV umpire. Yeah, review unsuccessful. That's it, because of a jersey pull. I think Sagar should mention it, probably saying on the camera, probably just pull the jersey, pull the shirts and show that there was a jersey pull. Only for that reason, I think it was given as Raiders safe. Let's look at this from this angle. Here, there, she pulls it. She pulls it from her right hand and then she lets it go, suddenly realizing that there are cameras. But the jersey pull was already over. So no teams have review now. Kalidas can go eat some biscuits and some snacks, because our healthy snacking partner is there, as another healthy raid from Pushpa running and touch on the right corner. So healthy snacking partner, the Flavor Republic. So Kalidas, I think I'm seeing him heading down towards the Flavor Republic area. पुष्पा 2 के हाउस में बड़ा आसान एक बार फिर से उन्होंने अपने कार्यों को निभाया, राइट कॉर्नर को शिकार बनाया। पिछली बार जरूर वहां पर अपनी टीम के लिए एक अंक मिल गया था, बट यहाँ रीनू आई है। रीनू आते ही थोड़ा सा जल्दबाजी करने गई, थोड़ा सा हड़बड़ाहट वहां पर दर्शाई, तुरंत वहां पर चली गई और बोनस भी नहीं चुराया वहां पर नवीन। अन्यथा यहाँ पर एक बोनस चुराया जा सकता था, बट हिमालयन ताज ने अब आखिरकार ऑल आउट दे दिया है पंचाला को। See, Harshit, we had so much expectations from Reenu, isn't it? We had built her up so nicely, even in the pre-shows and everywhere. Expectation was too high. Pushpa again with a lovely ankle hold from the left cover position. So generally, when you don't start well, is that the problem where you don't continue to do well in the Kabaddi match? I mean, that shouldn't actually be the mindset for the players, as Pranjala and Priya once again comes in. So if you don't start well, that's fine. You know, forget that moment and just continue, as Yasmin also has been taken out and Pinky comes in. And again, after the first all out, it's only Panchala Pride who allowed the Himalayan Tars to actually come back into the match. And second of all, stop playing for the players' name. It shouldn't be. They won't allow that pursuit. They definitely won't allow that pursuit, because the touch was there. Yeah, there was a touch. Again, a nice toe touch. And they are, I think, even playing for the name or the fame that Pushpa has. First of all, you need to forget that one. Because we always have mentioned that players are all equal on the Kabaddi mat. Outside the mat, whether you have the liking, idolizing or respect, that's all off the game. But when on the mat, see Pushpa and Bhavna, they're now breathing it very easy. First all out was inflicted by the Panchala Pride, and they have allowed the Himalayan Tars to make a big bounce back.
जी हाँ, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर हिमालयन थार्स ने की है पंचाला प्राइड के विरुद्ध। पहले 4 अंकों की लीड पंचाला के पास थी, बट अब 6 अंकों की लीड वहाँ पर हिमालयन थार्स के पास है। और मुझे पहले लग रहा था कि मैं मिरर इमेज देख रहा हूँ, दोनों तरफ पुष्पा देख रहा हूँ, बट बेस्ट ट्रेडर भी पुष्पा वहाँ पर रही है 7 अंकों के साथ, और बेस्ट डिफेंडर के तौर पर भी उन्हें 2 टैकल पॉइंट्स मिले हैं, एक कवर से और एक इनकी पोजीशन से एंकल होल्ड। नवीन, I was just thinking our graphic operator still not awake. Probably he put off both the photos in the same place, but then it is a fact. We knew that Pushpa can do all these things, and it finally happened. You see, the reason why I say Panchala Pride have allowed them to come back, Archit, is because of this. This plate gives us this indication. 12 attempts, out of which only 3 are successful. So that 12 came in after the all-out was inflicted. You know, when the all-out was there, so because Nikita Ranbir did so well in the raiding department, the all-out was inflicted, that super raid where Pushpa was taken off, and even Bhavna went out in the next raid. After that, you know, why the Himalayan Tars have come in is all because of the defensive errors from the Panchala Pride. And look at this. The beginning was close enough. There was a wide gap, and then it was almost even Stevens at 12 and 13th minute. It was 11 points each. And suddenly, after that 11-pointer one, where Nikita Ranbir was tackled out. Remember, Nikita Ranbir got tackled out in the cover position. The all-out was inflicted. And Reenu, I'm so disappointed. We built her up so much, expecting that she might come out there and do well. And she's not done it. As Pushpa, we will look at her zone-wise breakup as well. Starting the raid from the right flank. As the right raider goes towards that left corner, she's got a lot of points. See, where she's got more points is this area outside the balk line. Outside the balk line is 4 points, and those running hand touches towards the right corner. And that was, of course, inevitable. But all those traveling deep inside, and this once again brings me back to my point. Don't play for the name or fame that Pushpa has got. Don't play for her name or fame. Just see her as a normal play corner. और इसमें अब पुनीता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योति को अटैक करने गई थी इस बार, लेफ्ट कवर, थोड़ा सा एक बार फिर सरप्राइज देना चाहती थी, बट रीनू यहाँ पर आपसे ये कार्य की आवश्यकता नहीं थी। आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा ऑथराइजेशन करके मैच में बने रहना है, बरकरार रखना होगा पंचाला प्राइड को। ज्योति को एक बार फिर से एक आसान सा पॉइंट दिया, और आज पुष्पा का ज्योति ने अच्छा साथ निभाया है। नवीन, लेफ्ट कवर पर रीनू को हम देख रहे थे, थोड़ा समझना होगा प्लेयर्स को कि अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही सही, आपको रेडर को रेडर के तौर पर, डिफेंडर को डिफेंडर के तौर पर प्रदर्शन करना ही होगा। No, definitely that should come in very quickly. Bhavna, is it? No, Dimple that was. I think that's a couple of points. Yeah, definitely. Dimple, too very late for the dash when she was coming in. And 2 very important points. Only 1. Oh God, it's only 1. Should have been 2. No review left for the Panchala Pride. Yeah, that's what the manager is probably also saying. Only Dimple. All right. Maybe left cover defender just got a little away from the raider when she was going in. So only 1 point. But yeah, as you very clearly mentioned, the raiders should probably do only their job, and the defenders should just do their job. That's all is more needed. See, Manjit Chiller can be Manjit Chiller. Pushpa can be Pushpa. That's all. I'm not comparing, Pushpa to Manjit Chiller. I'm just saying only few can do that. See, even Bhavna, she's actually pitted as she's asking for a bonus point. She's not got it. And today, Nikita Ranbir has done that job of going away and trying to break that change. No. Bhavna with the chain comes across. No Dimple. She will revive Dimple back on the mat. Good chain tackle. और ये हो सकता है क्लोविया एक्टिव टैकल ऑफ द मैच। नवीन, बहुत ही शानदार चेन अटेम्प्ट आई, जरूर हवाई यात्रा पर उड़ने की कोशिश की वहां पर निकिता रणबीर ने, बट बहुत अच्छा शिकार। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रॉपर। Yeah, this is a problem there for Sangeeta Dalal and Chandni Rajput, both of them. Sangeeta Dalal on the left of our screen, very experienced. She was very happy yesterday with the way her players played, but today it was not the way that they wanted to start off. They started off nicely, but then they've allowed Himalayan Tars to bounce back big time. And look at Pushpa. She's now standing on the left corner. She comes in with a block. Nice, proper block, and she pushes her out as well. Wow. This is good. Again, where is the tackle coming in from? Bhavna as well, and along with her from the left corner. Is it Champa alongside her? Yeah, it should be Champa. Yeah, it was Champa. Correction, not Pushpa. Yeah, nice block.
और भावना का भी उतना ही अच्छा सपोर्ट था क्योंकि निकलने नहीं दिया वहां पर, और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया। और यही हिमालयन थाज अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दर्शाता हुआ नवीन। एक्सपीरियंस कहाँ पर काम आता है? एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आता है क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक डिफेंडर को सपोर्ट वहां पर चाहिए होता है। आप स्ट्रगल में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, असिस्ट करना बहुत जरूरी है। और हम बात कर रहे थे पुष्पा इज एन ऑलराउंडर, और तो पुष्पा भी देखिए नवीन अब बहुत ज्यादा ओवर डिफेंस में नहीं कर रही है बल्कि रेंज में ज्यादा पॉइंट लाने जा रही है। उन्होंने बड़ी शुरुआत में समझ लिया था कि अगर मैं डिफेंस में जा रही हूँ तो मैं बाहर जा सकती हूँ, बहुत इजीली गई, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया और पुष्पा भी अपने सुपर 10 की तरफ बढ़ रही है नवीन अब। Yeah, Panchala Pride's defense problems still continue as Pinky just couldn't escape that one. Yes, see, as a good player, you need to deliver in which department is what you need to first decide. So that is very good. That is what Pushpa has done. Sometimes she goes there and contributes in the defense, and most of it is the raiding thing. And Sunaina now has a hand touch, goes in low, and Dimple today is not probably the day that she really wanted to be. Right cover, not even a single tackle point, and the hand touch. तो अभी तक एक भी सुपर टैकल हमने देखा नहीं है। क्या पंचाला की तरफ से वो सुपर टैकल हमें देखने को मिलेगा? अटैक जरूर करना चाहेंगी सुनैना, एक अच्छी राइट कॉर्नर है और अब एंकल्स पर जाना बहुत जरूरी है। भावना रेड पर है, भावना ने आज ज्यादा रेड्स लगाई नहीं है तो पंचाला के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि भावना को पहले अंदर आने दे, बट अंदर आने देने के बाद अटैक करना होगा और रीनू ये नहीं समझ पा रही है। रीनू का रिवाइवल मिला था, ये सोने पर सुहागा था, बट उन्हें रेड में जाने का इंतजार करना चाहिए था नवीन। डिफेंस में इस तरह से पॉइंट्स नहीं गिफ्ट देना चाहिए था और शायद संगीता जी भी यही कह रही थी उन्हें जब बेंच पर आते हुए देख रही थी। But I don't understand why is Renu now suddenly become a defender when you know that you have done well. See, whether you have done well or no prior to the start of the series, prior to the start of the tournament, which is good. But Champa Thakur today, 67%. Running hand touch on Jyoti is what has been claimed here by Sunaina. She's wearing it. Yeah, she will get it. And no reviews left. Number 12 out. So, Jyoti not going back in time from that right end. So, I was just saying that, you know, where you don't have to rely on your original skill before you've come in front of the cameras, or probably in front of the world, I should say. Now you've got used to it. Now again, look at this right corner. There is Nikita Ranbir alone as a raider, and Bhavna very clearly went ahead and attacked Nikita Ranbir because she's the only one who can bring the team back. As Nadia, the coach of Palani Tuskers, watches on. Yeah, big shoulder dab that was not even a hand touch. So when you have that momentum in your field now, she also looks a little tensed because she also needs that first victory under her belt against the Aravali Arrows today. The next match that's going to come up, Aravali Arrows, Palani Tuskers, in a very short while from now after this match. Yeah, that's the next match that's actually floating away on the left of our screens as well. Champa makes that error. So Harshit, what I was trying to say was, 2 points. Panchala especially Pride. Renu, now when you could have been a defender or raider before the start of the series is immaterial. Yesterday you did well. Today, continue doing well. Because this is a continuous series. As there's another couple of points from Sunaina. Himalayan Tars. Now let's probably listen to the coaches. Timeout. First time today, I think. कोई दिक्कत ना है बेटा, आप रेड मारोगे, आप यहाँ डिफेंस करोगे, आप भी ओके, कोई प्रॉब्लम है, आराम से खेल, ठीक है। और नवीन ने बिल्कुल वही बात वहां पर कही कि आपको डिफेंस करना है, आपको रेड लगाना है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना बहुत जरूरी है। और संगीता जी ने बिल्कुल वैसा ही कहा है वहां पर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वहां पर बताया गया है कि आपको डिफेंस करना है, आपको रेड लगानी है। जरूर एक खिलाड़ी से यहाँ पर पूछा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और शायद सुनैना से पूछा होगा। सुनैना ने लगातार अपनी तीसरी बार टीम को सेव किया है और वो राइट कॉर्नर है, डिफेंडर ने, पुनीता ने अटैक किया था इस बार। पुनीता अटैक करने गई थी, पुष्पा एक बार फिर से इनका शीयर एजिलिटी जो है वो डैमेज करती जा रही है, पुनीता को शिकार बनाती हुई। Harshit, first thing they should probably get it into their system is don't play the match raid by raid. It's not raid by raid, it's 15 minutes.
That's what they need to look at, or at least look at the next 4 minutes, 5 minutes. That's how you need to actually play. You know, when you have 10 points as a deficit, why attack as a defender? What will you get? If you pull Pushpa down, all that you're getting is what? 1 point? That's it. But as a raider now, when Sunaina goes in, she needs to attempt multiple points. Just a bonus or just coming back with an empty raid won't work. So when you're down by 10 points, Sunaina comes back with an empty raid. So you're playing raid by raid. Don't play raid by raid. Play for the time, play for the next 4 minutes, 5 minutes. See where the situation of the match is going to be for the next 5 minutes. And Bhavna very simply goes away, attacks the left corner again. I think today the problem for the Panchala Pride, I think, is one, Reenu not raiding well, or rather not raiding at all. Forget raiding well. You know, and two, definitely their defense. जी हाँ, पहले हाफ में 3 अंक मिले थे और दूसरे हाफ में अभी तक एक भी अंक डिफेंस में नहीं मिला है पंचाला प्राइड को। और चाहे सुनैना या फिर चाहे और कोई भी रेडर वहां पर कितने भी पॉइंट्स ले आए, अगर डिफेंस उसे बचा नहीं पा रहा है, अगर वहां के सेनापति यानी कि डिफेंडर्स जो हैं वो आपके किले को नहीं बचा पा रहे हैं, तो चाहे कितने भी खजाना आप वहां पर रख लें, उसे आप अपने अपोनेंट से नहीं बचा सकते हैं। सोनाली आई हैं, सोनाली के पास दम कम है, मल्टीपल पॉइंट्स लेकर आने का, हैंड टच करने की कोशिश की, फिर 2 खिलाड़ी में एम्प्टी हैंडेड जाना मुझे लगता है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कहीं न कहीं पुष्पा के लिए बहुत अच्छा मौका होगा और चाहेंगे दोनों खिलाड़ी को शिकार बना ले। बट चलिए, पुष्पा ने कहा कि समय हमारे पास है, इजीली पॉइंट्स हमारे पास है, तो क्यों इतनी जल्दबाजी करनी। Oh God, no review as well. The decision has come in. Right, they're wanting to discuss something. The review was over. Why was a review now once again being given away? This was one review per match. No touch point. Our decision 1 point. Oh God. Okay. I think we need to just pull this back and stay on with the mat on the decision. I think Sagar Panchal will be getting it. A review over for both the teams, yes. I was just saying Kali sir, second review, but no. Sorry, this is one review per match. That's what it is. In the summit round, we have one review per half. We're going ahead with it, is it? Right. TV umpire, Panchala Pride challenges. No touch point. Our decision 1 touch point. Please review. I think there's a small little confusion here. One review per match. That's what it is. Because I think everybody are getting into the groove. I probably will look at it that way, saying everybody are just getting into the groove of this JSG Women's Yuva Kabaddi Series. But whatever that is, Arshit, we were talking about every player playing as per her. Successful. 1 touch point. Himalayan Tars. Right, I think we will keep it as one review per match. That's what it is. We will end that conversation there. Right, so going back to one player playing what should be done as per her original role. That's the only way that we'll have to talk now, because Pushpa can do both. So the other players should not try and become Pushpa. They need to become themselves. See now, Reenu today, I don't understand why she did not raid at all, because Sangeeta Dalal will be the best person to answer that question. The do or die raid, and she wants to go under the chain, but no, that's a second all out for the Himalayan Tars against the Panchala Pride, and that's it. All doors closed. And they're not even thinking of that 1 point, Arshit. That is my another issue as well. जी हाँ, ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर पंचाला प्राइड के लिए जारी है। वहाँ पर रीडर्स को रेड पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, डिफेंडर्स को वहाँ पर डिफेंस में जो है वो पॉइंट्स छोड़िए बल्कि बहुत सारी गलतियाँ वहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। बट अब अगर हम बात करें, नवीन आपने बात बहुत ही अच्छा टॉपिक वहाँ पर किया है कि पुष्पा की तरह वहाँ पर बनना चाह रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी, बट उसके पीछे वो बहुत मेहनत, बहुत वहाँ पर कंसंट्रेशन, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर लगाता रहा है। एक और बार सब्स्टिट्यूशन जरूर है पंचाला प्राइड के लिए, क्योंकि पुष्पा दिखना बहुत आसान है बट पुष्पा जैसा बनना बहुत मुश्किल है नवीन। और सबका एक अलग रोल होता है, सबकी अलग स्ट्रेंथ होती है और उस पर ध्यान देना चाहेगी पंचाला प्राइड। Harshit, I'll tell you, when the
league formats actually started, and I was fortunate enough to be there from the inception of it. There was one big name, and oh, pursuit! Come on! What are you trying to do? This was very, very good from Sunaina from the right corner, and Kavita was just jogging away towards her court. Very lethargic, very lethargic. Shouldn't have just shown her back so much. And this is good. This is good from Sunaina. I'll tell you what, we've just had a Clovia active tackle. Can this be a Clovia active pursuit? It was very active there from Sunaina. Of course, Clovia is the apparel wear, especially for women in sports. That's good. Kick. Pushpa says enough. You've been more active. Now just get a little deactivated on the bench. So I was just saying, Arshit, if you remember Rakesh Singh, the man who came in with so much legendary experience behind him. And when the league format started, say only the first season, he rode on that achievements that he had done before. But when that came in, when it was the world to see the sport in a more energetic way, in a more agilitic way, in a more tensed manner, which was not so much earlier, then what happened? I'm not saying Rakesh Singh did not perform. I'm just saying this sort of play did not suit him. So when you said Pushpa has done so much prior to this and just put in so much efforts and doing, every time she's just performed so very well, whether she's playing for Himachal Pradesh or whether she's playing for India or whether now she's playing for Himalayan Tars, it's all the efforts, how she's molded herself as a player. So again, Anuj Saini for me becomes a big case study. I will never say that Anuj Saini cannot be a raider. He's not a raider currently. And I'm not saying he needs to. What is happening here with Kavita? 1 point, Panchala Pride, number 5 out. Once again, this is the second time, Arshit. I have not seen this before. 2 pursuits and twice Kavita has been attacked. I think she's struggling to go back to her half once, and then this was the second time. There was a big jersey pull that came in. Now do what I read now for Pushpa. So every player can be Pushpa if they mold themselves. But where is that molding is a question. चाहिए बहुत जरूरी कि आप किस तरह से वहां पर उन सभी चीजों को लागू कर सकते हैं। बट पुष्पा यहाँ पर जिन्होंने शुरुआत से प्रॉपर लेफ्ट कवर कह लीजिए, आप प्रॉपर राइट ट्रेडर कह लीजिए, बट हमेशा वो सही कार्यों करती है। इस बार भी ज्योति को वहां पर शिकार बनाया। इनकी पोजीशन पर क्या ज्योति वहां पर मौजूद थी? बिल्कुल इनकी पोजीशन पर मौजूद थी। एंकल होल्ड का प्रयास किया, कैसे शिकार बनाया जा सकता है। बट नवीन, चलिए हम हैशटैग आगे का रास्ता की बात करते हैं। एक तो पुनीता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जोन वाइज स्टेट्स को जब से हम लेकर आए, बहुत सारे खिलाड़ियों के प्रति हमने वहां पर कैसे उन्हें पकड़ा जा सकता है उसकी हमने बात की है। यहाँ पर सोनाली को पकड़ लिया, फिर से कवर ने अटैक करके। क्या इस बार डिंपल थी, क्या चंपा थी या फिर भावना थी? बट जो कोई भी हो, पॉइंट मिलेगा हिमालयन थार्स को। Definitely was that in defender Bhavna coming in from that left in. Fabulous double ankle hold. It's very good to see as Bhavna, when it gets executed in a nice way, it does look good. But when it goes wrong, it horribly goes wrong with the in defenders. But yeah, see, when you said how do you attack, how do you stop rather, Pushpa, is not the way of not attacking her and going back. She has a little bit of loopholes. One, a strong ankle hold against her is a good weapon. Because when she comes in, first she goes with the hands and then she probably attacks on the toes. So first of all, if you have a very good ankle hold, that's a good thing. Match over again, Himalayan Tar, 16-point victory for them. And then from the covers, if the cover defenders are very strong, like if you have a dimple in someone else's teeth, that's the best way to stop Pushpa. Because she's not that very agile when she is wanting to escape it from the lobby. And I haven't seen her turn at all. Because the challenge doesn't come in from any cover defender to dash her or block her. The challenge never came in. See, that's why I always say, don't play for the fame of the player. Fame of the player is outside the Kabaddi mat. When she's on the Kabaddi mat, go there, attack her, push her. She's just a player. Twice, you just break her arrogance. Twice, you break her confidence. That's it. She will also take you seriously. And that has... Give it up for Polani!
Tuskers. That this is the match which will give them the first victory points on the points table. If that cannot be happening today, they will be once again into a lot of trouble, which they really don't want to probably, as Aravali Arrows will try to stop the Palni Tuskers, and Gyanu Thakkar and Muskan Malik out there in the corners, and of course Prachi Beniwal, Nidhi Sharma and Renu Deshwal will be there in the raiding department. Manpreet and Shushma Bharadwaj will be in the covers, as Rajni Gulia, Rakhi, Sumitra, Pooja Saini and Priya Sharma will be in the substitution lines along with their coach Sohan Lal. Very experienced, but he will want to put out a winning combination here. That is what he'll be thinking, Sohan Lal. And alongside with me in the commentary box this evening is Navneet. Navneet, for the first time, I think me and you are getting along together, the JSG Women's Yuva Kabaddi Series. Welcome. जी हाँ बिल्कुल नवीन, और पल्ली टस्कर्स की टीम आ गई है। मध्य में देखिए पी साथिया है, राइट कवर पे मैथिली मुरुगाविल और मुथु प्रिया है लेफ्ट कवर पे, राइट इन पे कंचन रवि और खतीजा है लेफ्ट इन पे। कॉर्नर्स में देखिए स्नेका राइट कॉर्नर पे और लोगेश्वरी है लेफ्ट कॉर्नर पे। इसके अलावा सुभिक्षा, सौंदर्य, अतक्षया, भूमिका और विवेका, ये है 5 खिलाड़ी जो बेंच पे है फिलहाल पल्ली टस्कर्स के लिए। नवीन Definitely, and Navneet, before we even go ahead and get this very exciting match underway, what's your thoughts on the JSG Women's Yuva Kabaddi Series? It's happening right here in Jaipur. Remember, 7 editions prior, we were here starting off the Yuva Kabaddi Series, and it has once again come back to the home where it all began, and the right place to actually start off the women series as well, as Palni Tuskers have won the toss and the first raid will happen from the Aravali Arrows. या बिल्कुल, और क्या खूबसूरत शहर है जयपुर। पिंक सिटी कहा जाता है और मैट का जो रंग है वो भी पिंक हो गया है नवीन। And no doubt about that. But I'll tell you what, it's not supposedly to look pink on the screen is what our team was probably wanting to do, because they want to put out that Yuva Kabaddi Series is magenta sort of a color out there. But Nidhi Sharma has put out good colors for herself in the raiding department. 57 on the raid strike rate out of 11 raids that she's put in. So that color, when it came out of the machine, it looked something else. And it eventually, I think, took that pink color because we are in the pink city. Apart from that, no other relevance, as Kajita Hussain. One proper raider. Khatija is the only survivor, or probably the only lone warrior, I should say, because she survived the attacks that came in from the other teams yesterday, and she was fighting as a lone warrior. She needs support, Navneet, and 50% the raid strike rate is good, but Khatija definitely needs support. जी हाँ बिल्कुल, आपको जैसे मेरा सपोर्ट मिला है, पालनी टस्कर्स को भी सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट चाहिए। No doubt. As of course, see, the Aravali Arrows also very good, but they are also searching for their first victory. Palni Tuskers searching for their first victory. Let's go down to the countdown and get this match underway. Yeah. Let's do this. Here we go. Jones just watch you. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kabaddi. And the first raid will happen from the Aravali Arrows. Sagar Panchal is all set to give the go-ahead. Right there, the whistle goes in. And Navneet, we are just next to the wonderful cricket stadium here in Jaipur as well, the Savai Mansingh Cricket Stadium. And just next to that, inside this arena, is the Savai Mansingh Indoor Stadium, as Renu Deshwal comes in for her first raid. But as we always know that you are the Navipedia, so something about Savai Mansingh, I want to listen to that from you, as Renu has her hand touch on the left cover. First points for the Aravali Arrows. जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम वहाँ से खेलती है और अक्सर देखा जाता है कि उसे अपना किला बना लेती है। फिलहाल यहाँ पर देखिए रेनू ने पॉइंट लिया है और कोर्ट थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर
11/8 ये कोर्ट का साइज है नवीन। Yeah, correct. Very correct. 11/8. But yeah, forget. Oh, surprise attack from the right end. Red it out. Khatija 1 point. did not Lovely expect that arrows. one. She should have expected that. This is not what Nadia really would have planned, the coach of Palni Tuskers, along with Jeba, the manager. Look at this. Surprise attack from the right end. Very good work. Just before this, she went in and got the raid point, Renu Deshwil, and now she's got the tackle point as well. But we will speak more on one player doing multiple jobs there, Navneet, after you throw huge lights on Savai Mansingh. And another running hand touch from Nidhi Sharma on the right corner. Strong right corner. Sneha has to now go 1 back. point. Lovely arrows. Number 6 out. जी बिल्कुल, सवाई मानसिंह बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। और मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है सवाई मानसिंह की, कि जब राजस्थान वहाँ खेला करती है पूरे 7 मैच, तो ऐसा कई बार देखा है कि पूरे 7 के 7 मैच वहाँ पर जीती है। और एक और सवाई मानसिंह के अलावा जयपुर में हवा महल, तो क्या यहाँ पर स्टेडियम में कोई हवा चल रही है या इंडोर स्टेडियम के कारण कोई हवा वहाँ नहीं है? नहीं, बहुत हवा चल रही है, लेकिन रेनू once again wanting to go for the ankle hold outside the balk line. First point for the Palni Tuskers. Really well done on that occasion, not to allow those legs under the grasps of Renu. Nicely keeping her leg away on that occasion. Nice work from Kanchana Ravi. But you know what, Navneet, I was expecting some history talk from you about Savai Mansingh, the king, not about the franchisee of cricket. Nice double ankle hold. Good work. And the first tackle point as well now. That comes in via good work from the captain herself, Maithili Murugavel. And the time of attack was very good. Just going in and the angle with a double ankle hold. Good one. Sohan is a very experienced coach. Navneet, that's what I was expecting. Savai Mansingh, the king. Why he's so relevant with Jaipur and all that. बहुत ही क्विक सवाल था, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्या सवाई मानसिंह बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड थे? Okay. We'll probably check that up on the internet quickly maybe. Nidhi Sharma goes in for the bonus point under the nose of Logeshwari. Probably she's got it. Yeah, but this is a different looking Aravali arrows from yesterday. Yeah, nice bonus attempt. Good one. Logeshwari did not attempt on the ankle hold, which is a good ploy because her left leg also was very close. Could have been a toe touch on that occasion as well, along with the bonus. And now Khatija. Yeah, so I think he was the emperor. Savai Mansingh. Probably all that respect comes in just to remember the great man. जी बिल्कुल, और इसी बीच 4 और 2 का ये स्कोर। यहाँ पर निधि शर्मा पकड़ी गई है। Fabulous. That's the Clovia active tackle. No doubt about that. Strong reverse ankle hold from Logeshwari. Brilliant. First she moved towards her left, covered the angle nicely and did not allow Nidhi Sharma to go through, and the support came in very quickly from the rest of the Tuskers. It's a do-or-die, the first one of this match. And because what the men have done with the name Palani Tuskers, it's a huge load that these girls also need to live up to that expectation. Manpreet, correction, Manjeet on that occasion. Strong double ankle hold on Satya. And she did not probably have any chance there, Navneet, isn't it? Pressure of do-or-die raid and Manpreet going so low, double ankle hold, and no space to breathe. जी बिल्कुल, और क्योंकि आपने पूछा और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लिया जाए, और वहाँ पर सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि मान सिंह महाराजा थे, ये तो बिल्कुल पता था बात, लेकिन प्रिंसली स्टेट जयपुर के वो 1922 से लेके 1947 तक वो राजा रहे।
लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रिवी पर्स यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स मिले थे उन्हें एक प्रिवी पर्स दिया गया था, एक मनी के रूप में कुछ पैसे मिले थे और वो एक एम्बेसडर टू स्पेन भी थे भारत के लिए बाद में और एक नोटेबल पोलो प्लेयर रहे हैं। My God. And no doubt, there's an official timeout that's coming in. Sagar wants to give a green card to Jeba. Oh, my God. Manager Jeba, first green card of JSG Women's Yuva Kabaddi Series. Sagar is having a very, very active day. I'll tell you about that. But what happened here was Maithili not going in very correctly with the angle. The captain herself from the right cover didn't pull herself back. So we've seen, you know, names of these stadiums, I mean, which had no relevance. Because the biggest relevance for me is Kempe Gowda International Airport. Because the man who built Bengaluru, the man who actually laid the foundation of Bengaluru was Kempe Gowda. So that's why most of the settlements in Bengaluru is named after him. And also big respects given to Sangulli Rayana as well, because he was the front man in that Rani Chennamma's time and period where Sangulli Rayana was there. So the main railway station is named after Sangulli Rayana railway station, and the international airport in Bengaluru is named as Kempe Gowda International Airport. And of course, Kempe Gowda is a very, very big name that is attached in the hearts of Kannadiga. So something like that. Samay Mansingh being a polo player, as Kanchan does not escape that ankle hold. Strong one again from the right cover. Good one from Sushma. So as a polo player, naming him for the indoor stadium is very, very apt. Because we've seen some names which are, I mean, let's not even talk about it, but some names which don't have any relevance. But Savai Mansingh, yeah, why not? और सवाई मानसिंह, क्योंकि पोलो खेल की बात हुई और शायद उन्होंने 1933 यानी 1933 में वर्ल्ड कप भी जीता है पोलो में। My God, seriously. See, this is why we say we need Navipedia in the commentary box. Navneet. Nice falling hand touch that was from Katija. Different skill. Right, we've seen a flying hand touch. That's a falling hand touch on Sushma on the right cover. Yeah, there. Probably if you don't like any of your elders and you're forced to fall on their feet, probably that's what I'll be doing. Falling away from a distance. Do or die raid. Do or die raid. Now Nidhi Sharma. That is why I say, come on, a do or die raid is the pressure on the raider, Katija. You've just got a lovely touch point on your raid. And what was necessary for the tackle attempt? Navneet, this is what I was trying to talk about. Yeah, that is what it is. That is what Nadia is asking. Yen pona. அதுதான் அந்த பெரிய கேள்விக்கு தான் இங்க நமக்கு வந்து பதில் கிடைக்கல. That is what I was trying to say. Why go for the tackle? And Nadia, the coach, look at her reaction in the background. Jeba and Nadia, both of them, the moment she saw Katija going for that, hands on forehead, and then when she was going to the bench, she says, எதுக்கு போய்கிட்டு இருந்த? That means, why did you go for the tackle? So, in the last match, in the previous match, Navneet, me and Harshit were talking about one defender or one raider doing their primary job very correctly. See, we've spoken about this in the men editions as well, but in the men's edition, we at least have the roles defined very correctly. Now see, the block is not right. Nice turn towards the lobby from Nidhi, she escapes. Number 6 out. So when you look at Katija now on the bench, she'll now be actually hitting her head on the bench and saying, why did I do that? And now Palni Tuskers are on the verge of being pushed to an all-out. And only Pushpa Rana, I'll tell you that, only Pushpa Rana, because of her stature, because of what she has achieved, she probably can do both the things, raiding and defending.
the Himalayan Tarsus captain, the big Himachal Pradesh player. And also, Navneet, she's not been challenged. Because I want your opinions on this as well. The players now on the mat at least need to forget the fame of the player. Again an ankle hold. Nidhi Sharma has got 2 more points. It was a super tackle situation. The defense of Palni Tuskers once again falling apart. So forget the fame of the player. 1 and 2. Look at them as normal players. Forget their achievements prior to that match even. I'm saying forget in the previous season of what they've done to India, their state, Khelo India, youth games, university games, whatever they've done. You need to even forget what they've done even in the previous match and then go attack. That has not been happening against Pushpa. बिल्कुल, और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। यहाँ पर सौंदर्य पकड़ी गई है। इस चर्चा को जारी रखेंगे और जी हाँ बिल्कुल। Yeah, first all out. Yes, Navneet, go on with that ploy of forgetting. Nice ankle hold. Clovia active tackle. No doubt about that from the left end. So only when you challenge the player, you can 1, stop the player, and 2, that will also be a challenge to a strong player like Pushpa Rana to come up with different strategies, to come up with different skills. Nice back hold. Sneha's idea was right. I think it was just a half an inch towards the midline. That was a problem. So, why we initiated this talk, Navneet, is also because that's what I want to put it across. Because in the previous match, she was awarded as the best raider and best defender. Because she knew when to attack in the raid and she knew when to defend when her team needed tackle points. So, you can do multiple things, but doing it at the right time is what is needed. Manpreet couldn't dash as Sagar Panchal just wants to have a talk. I think Navneet, बिल्कुल यहाँ पे चर्चाएं जारी रहेंगी और आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। और इसमें एक मेरा विचार ये है कि जब भी फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर जब खेल खेली जाती है और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी आपस में पहली बार खेल रहे हैं तो अपने टीम को समझने में कभी-कभी देर होता है। और आप इससे रिलेट करोगे क्योंकि जब युवा कबड्डी सीरीज पहली बार शुरू हो रही थी मेंस एडिशन में, तो भी कुछ ऐसे चीज़ें देखी जा रही थी। इसके अलावा अगर आप दूसरे लीग्स की भी बात करेंगे, या मुझे याद है कि लगभग 2005 में एक वर्ल्ड टीम बना था जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था। तो उसमें खिलाड़ी तो बहुत ही शानदार थे, लेकिन आपस में वो एक समन्वय नहीं था, एक कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसमें खिलाड़ियों को जब वक्त मिलेगा, जब वो वक्त गुजारेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे एक दूसरे से, और वो आपस में जब टीम में खेलेंगे तो एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बेहतर समझ पाएंगे। Yeah, good point. Very good point. Sohan should be one of that catalyst who can go out there and make that happen, because you need that catalytic force to gel the team along together, and the coach is the main person behind making that catalytic effect work. And now see once again Maidili, as a right cover defender, how are you going to attack a right raider? That is a problem, isn't it? See, now watch this. How, as a right cover defender, wanting to go for the ankle hold when the raider is almost turning towards the midline? That's a problem. Prachi Beniwal getting that point. But yeah, I think even now Sushma does not dash her well. So the Raiders are doing okay for the Palni Tuskers. It's the defense once again that's been struggling. They have a review as well, 1 review per match. They can take the review if they're not okay with it. Sushma not going in the chain for the tackle and for the dash. Good work from Satya. She turned, used the lobby and goes through. Yeah, so Sohan, yesterday he saw his team struggling. Very good point again, Navneet, from you, that more they play, they will get gelled along together nicely. This is correct. But what am I trying to, again, reiterate is the point of not playing for, say,
Renu's stature. She may be experienced than the others. You know, when Pushpa comes on, I've seen that happen from the other Bonus players. point, Aravali Arrows. They kind of look up to her. That's what I don't want the others to do, because this is a competitive series. This is very big, and we are having big plans. We are having big dreams of taking this much higher. So one important thing is, I should probably say, the Didi factor. You know, stop having that Didi factor or respect in your mind, Change the code. at least when they are playing. Of course, off the mat, yeah, you idolize them, you respect them, it is all okay. The Didi factor should not probably come in when you are playing against players like Priyanka or Pushpa. What say on that, Navneet, as Aravali Arrows lead this by 10? जी बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोली है, लेकिन इसके लिए होता क्या है कि जो आपका माइंड वर्क करता है वो डेटा पे करता है, क्योंकि जब तक आपको कोई सक्सेस अपने सीनियर के खिलाफ नहीं मिलता है, आप वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही आप जब 1-2 बार उनके खिलाफ जीतेंगे, और इस पे चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ पर किसी भी वक्त ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी मिनट, कि पलनी टस्कर्स कभी आगे जा पाई है। कोई यहाँ पर क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। And also, the problem for that is the defense. The tackle is not coming through for the Palni Tuskers. Maithili with only 1 tackle point. Apart from that, nothing else. We will see that as well. Yeah, there you go. Just a couple of tackle points. And not too great with the Aravali Arrows either, but the number of attempts. You know, let me guess, Palni Tuskers would have attempted more than, say, 12 to 13 attempts in the first 15 minutes. 12 to 13 is what I am guessing. Or 11, almost close, 90% right maybe. So 11 attempts is too much in the first 15 minutes. And on the other side, look at the rate there, Navneet. 9 attempts and 4 successes, okay, you can accept it. And the Raiders, because Khatija is struggling, and the raiding department of the Palni Tuskers are also struggling, as Nidhi has done really well today for her 7 points. And she's traveled the court, no doubt about it. She's traveled deep in front of the left corner. She's traveled towards the right corner as well. And outside the back line, yeah, that's a problem. 3 points, the highest number of points that Nidhi's got today is outside the back line. And that clearly shows why that 11 attempts was a bit too much for the defense of the Palani Tuskers. Yeah, let's come back to that Didi factor, which has to be eliminated. Good point from you as well, where you said one small success against your senior, and then you will probably be very confident. Yeah, that in that process of that one small success, you know what I have seen? I've seen players not even challenge Pushpa. See, I'll tell you, I'll take you back to how Jasprit Bumrah got into the Indian side. He was challenging Virat Kohli. When Virat Kohli was playing for the Bengaluru franchisee, and Jasprit Bumrah was there for the Mumbai one, and this is a nice ankle hold. Yeah, definite. 1 point. Clovia active tackle from that left corner, Logeshwari. Good work. Very good ankle hold. 2 corners are good, Navneet, for the Palni Tuskers. जी हाँ बिल्कुल, और ये जो चीज़ें हैं, सैडली ये आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीख सकते हैं। और जब आप छोटे होते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, और हम लोग जिस तरीके से इंडियन सोसाइटी या एशियन सोसाइटी में बड़े होते हैं, आप जब बड़ों का रेस्पेक्ट करना ही आपका वो मेन फिलॉसफी होता है, तो आप उनको उस तरीके से देखते हैं। और यही कारण है कि लेकिन अगर आप कोहली को देखेंगे या जसप्रीत बुमराह को देखेंगे, और जब आप बहुत सारे चैलेंजेस इनिशियली अपने लाइफ में देखते हैं, तो आप ऑलरेडी सही समय पे आप सब कुछ करने लगते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप जिस तरीके से जायसवाल को खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी बीच 25% टैकल सक्सेस रेट है, और ये बहुत ही शानदार चर्चा है। और खेल में जनरली जो कोचिंग होता है वो खेल के एस्पेक्ट पे होता है, मेंटल साइड पे नहीं होता है। तो मुझे अगर स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी की बात करें तो मुझे पैडी अपटन बहुत पसंद है, जो 2011 में भारतीय टीम के साथ जुड़े थे, और उनके मैंने काफ़ी पढ़ा है उनको। और जिस तरीके की वो बातें करते हैं ना, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो समझेंगे कि वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं मेंटल साइड की,
वो दीदी फैक्टर की वो कैसे जा सकता है जब आपके साथ पैडी अपटन जैसे कोचेस मौजूद हो जो उस तरीके की चीजें सिखा सके आपको. Very true. Very, very true. Subhashika in the do or die raid. She gets a point. Much needed for the Palni Tuskers from the right corner. There was an error. Yeah, the psychological factor. Yeah, that's what. The Didi factor. Let's call it as the Didi factor. You need to forget the Didi factor very soon if you need to really shine, because this is a lesser number of days tournament. Nothing less in the intention and aggression. There's a nice kick on Soundarya in that left end. Beautifully executed as well from Nidhi. Yeah, see, once again, no problems whatsoever. Yeah, nice kick. Good execution. Right, so speaking about the Didi factor, yeah, you very correctly said it has to come from the coach. Yeah, very true. The coach needs to say, listen, she may be your Didi, where whatever outside the Kabaddi mat or whatever, you can have your respect. I'm not against Pushpa or Bhavna here. I'm just saying, see, even their game will grow now, isn't it? If Pushpa or Bhavna or Priyanka, or even Renu here, now who's going to raid, very experienced. Maithili, who's sitting on the bench, is also experienced. If they've been challenged, even their game will grow, isn't it? I always remember what the great music legend A.R. Rahman always says. He says, I am able to do music even now. Say what? He's in the industry for what? Like very healthy 20 years now. So he says, new music directors, or rather now he's again a legend in the making, Anirudh. Big name when it comes to music. He was given great hits. When you speak of Leo, Master, Vikram, all big movies. So he says, Anirudh keeps me motivated. A.R. Rahman says, Anirudh keeps me motivated to give it good music. So I'm saying, challenge Pushpa, challenge Priyanka, challenge Renu, the other players. Keep them motivated to do well. Keep them motivated to, just go out there and check themselves out. Because I haven't seen even now strong ankle hold from Lokeshwari. Doesn't work out on this occasion. Nidhi Sharma, bonus +1. I think she's got a Super 10. She's definitely got a Super 10 with that couple of points. जी बिल्कुल. और आप जिस तरीके की खूबसूरत चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर डू और डाई रेड है. पलनी टस्कर्स 10 और अरावली एरोज 22. यहाँ पर 5 खिलाड़ी डिफेंस में मौजूद है. क्या अंदर जा करके यहाँ पर पी साथिया कुछ कर पाएंगे? लेकिन यहाँ पर बहुत ही एडवांस टैकल था, लेकिन साथिया को मौका नहीं मिला है नवीन. Correct. Because Renu came in from that angle, isn't it? Satya was also not in the right angle to go towards the midline. She was just falling on her back. Let's listen to Nadia, the coach. We've taken a time out. Let's listen to the coach, Nadia. அடிச்சாதான் சப்போர்ட் போணும், புரியுதா? நீ லெஃப்ட் கார்னர் நின்னுக்கோ, சரியா? மேனேஜ் பண்ணி ஆடணும். டீப்பா போனா கால்ல விழுணும். ஆங்கிள் இல்ல கிடையாது, தைல விழுணும், புரியுதா? லோனா போக கூடாது. உள்ள போறது கிடைச்சதுனா பார்க்கணும், இல்ல வா தேர்ட் ரைட் அடிக்கலாம். ஓகேவா? ரெடி? அருமையான வார்த்தைகள். That's what I'll probably say. Good words. Substitution. A thoughtful process. Still Sohan is talking to his players. He's okay with what they have done. So what Nadia, the coach of Palni Tuskers, said there, Navneet, was you be careful on the left corner, and she's asked Sneha to come in only when the raider is deep inside. Adichada pono support. That means only after the corner attacks, then you go for the support. Don't go prior to that. And Sneha does not understand what Nadia said. She just said, don't go to the attack first up. Sneha did not understand what Nadia explained so much. Oh, I feel bad here for the coach as well. We should have seen her reaction, because Sneha did exactly the opposite of what Nadia explained there, Navneet. She very clearly said, you go to the attack only when it is needed. Sneha did exactly the opposite. ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोचेस कुछ कहते हैं और जो खिलाड़ी है वो कुछ और करते हैं. आपके गुरु कुछ कहते हैं, स्टूडेंट का जो व्यवहार रहता है बिल्कुल ऑपोजिट रहता है. और नतीजा यहाँ पर बिल्कुल पकड़ी गई है. I think because this was repeated footwork.
That is what got Sushma into the action so quickly. Khatija had that rhythmic, repeated footwork. That's why it was so easy for Sushma from the right cover for the single thigh hold. You need to change your Substitution. footwork Only Tuskers. now and then. 14 It's in, probably walk 5 in. out. Don't have your regular movements. Don't have your regular sort of body language. And there's another substitution that's come in for a super tackle situation. Bhumika, I think, as a defender who has come in now. Bhumika needs to probably attack properly, but no. 1 Nidhi point. Sharma is on a Round roll arrow. today. Number 14 out. Wow. Well, let's once again go back to our discussion, as this is getting a little easier for Nidhi Sharma and the Aravali Arrows. So, yeah, the Didi factor one should go, and then challenge them to change their way of playing the match, and playing the game. And you very correctly mentioned, Navneet, the respect is that rooted culture in our Indian society. Today in the morning, when I just went for my regular routine jog and the cardio in the morning, I saw a couple of kids, heading to the school, like early morning, early like 7:15, they were heading towards there. There's another all out now. This is the second all out. Palni Tuskers. And again 1 looking plus a 2, 3 little out of points. clue, out Aravali of Arrows. place here for the All Palni out. Tuskers. Palni Tuskers. All out. So yeah, those two small kids, again carrying some huge bag on their back. A lot of books, I should say. I was so happy to see their mother was walking in the front, and these two kids were behind their mother. They reached the door of the school, and before entering the school, Navneet, first the elder boy touches the feet of the mother, then the younger one sees. Younger one touches the feet of the mother, and this is definitely a Kabaddi Kamal moment. It is a 4-pointer raid here for Renu for sure. Palani Tuskers have this habit. They did it against Nikita yesterday. Now they've did it against Renu. They've given away a 4-pointer raid as Sagar Panchal rotates his wrists and signals that 4-pointer one. This is in consecutive days, they have given away 4 points to consecutive teams. या बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 4-4, और बिल्कुल जब भी 4 पॉइंट आता है तो मुझे वो एड याद आ जाता है जिसमें बोलते हैं ओंदु मोरू येरुडु नाल्कु. Yeah. The glue ad where the fishes just get stuck. But yeah, see, the problem is here, they're not getting stuck here for the Palani Tuskers. They are becoming the fishes that has been tangled in the net. Good toe touch, very good toe touch from Satya 1 point. on the right Palni corner. Tuskers. Good Number skills 11 being out. exhibited. Yeah, you like it when something out of the normal happens like this. Strong, easy stretch of the right leg. She can be a good support for Khatija. Now, we were expecting a good support from Khatija, and she can be one. But similarly, like yesterday, we have even today that 3-pointer, rather 4-pointer 1 point. going away. Aravali Arrows. It's just another Number 6 point. out. जी हाँ, खेल, अंतिम 5 मिनट. जी हाँ, एक ज्यादा पहचाना वहां पर आवाज हमें सुनाई दिया. अंतिम 5 मिनट. पल्ली टस्कर्स 12, अरावली एरोज 34. 5 मिनट से कम का खेल. खतीजा हुसैन यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी में नजर आ रही है, और 7 खिलाड़ी मौजूद है, उनका इंतजार कर रहे हैं. और यहाँ पर वो जो मछली पकड़ने की कोशिश की गई सुषमा से, वो जाल से निकल गई. Yeah, Sushma not getting the hold of the angle of the thigh properly, and good escape from Khatija, I should say that. She escaped that grasp very nicely. Let's listen to Palani Tuskers again, as Sohan wants to just have a word with his players. Yeah, Nadia. 5 பேர் 4 பேர் இருக்காங்களா, தொட்டு ஆடு, முன்னாடி புஷ் பண்ணி ஆடு, ஹேண்ட் டச் பண்ணு, அந்த இடத்துல டீப்பாக உள்ளே போகாது, காலை புஷ் பண்ணுறோம், வெளியே இந்த செக்லேயே ஆடுவல்ல, அது மாதிரி ஆடு. உள்ளே வந்ததுன்னா காலில் தான் விழணும், ஆங்கிள்லாம் பிடிக்கக்கூடாது. ரெடி, கரெக்டாக ஆடு. லோனை விடக்கூடாது பாப்பா, டைம் இல்லை, இங்கே பாரு டீசெண்டாக ஆடணும். Yeah, simple words from Nadia. She's very clearly told Satya that romba ulla pogada, deepa veladada, melaya velada. That means just play outside the back line. 1. And then for the defense,
Once again, she's very clearly told, don't go to attack. Just don't go to attack, as Raki Tawar has come in from the bench. Yeah, so Navneet, that respect factor. 4 minutes. The younger one also touched his mother's feet like the elder, and then they both go to the school. Have we ever done that? I mean, while you go to the school, it's a daily routine. And you touch the feet and go in, and here she crosses the midline, Satya. She is a very, very good support. Palni Tuskers. For sure. Number 3 out. जब कोई एग्जाम होता Read. जी हाँ, निधि शर्मा यहाँ पर 5 खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ 3 मिनट का खेल बचा है। अरावली एरोज बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है, किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगा है कि पलनी टस्कर्स अरावली एरोज को चैलेंज करेगी, लेकिन अरावली अपने जो गेम में है वो लगातार निरंतरता के साथ Number 14 out. अपने गेम को अच्छा करते हुए, और भूमिका वहां पे बाहर गई है। Read. And also, yeah, this is Satya, not Khatija. Sorry, this is Satya that's gone into the raid. Sorry on that graphics. Again, she's got a point. Bonus plus one, maybe. Ah, she wants a bonus. She can go for the review. She can go for the review if they want to. No bonus given away. I think it is just 1 point. It is bonus plus one for sure. Yeah, they are going in for the review if they want to. Yes, they should. They really should. Yeah, good work. Please come. What is your challenge? Okay, please. TV umpire. Palni Tuskers challenge. Bonus plus 1 point. Our decision only 1 point. No bonus. Let's look at this. Navneet, I thought it was a bonus point. Yeah, there. That is it. Even before the defender has touched the legs, maybe she's landed it. Navneet, probably it's that bonus which the review will probably go in as per my books, as I always say that. जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो किताबें इस बार लिखी है वो निश्चित रूप से सही होना चाहिए। एक पैर अंदर था और जो आगे वाला पैर है वो हवा में था, और इस स्थिति में बिल्कुल 1 पॉइंट बोनस के रूप में मिलना चाहिए। 15 और 35 का ये स्कोर, और सिर्फ महज 2 मिनट 13 सेकंड का खेल बचा है। औपचारिकता बची है, लेकिन पलनी टस्कर्स चाहेगी कि इन 2 मिनटों में वो भरपूर खेले और मजे लेके खेले। Yeah, correct. I can see the tensed face there. Reserve player not playing in today's match, rubbing her fingers around and still checking if the hands of the defenders had touched Satya's leg, then the bonus might not be there. But I think before the touch, there, the land on the bonus line was over, and then the touch came in. And that is what the TV umpire will probably be checking out for the bonus on the review. Unsuccessful, because the decision was the defender touches the legs of Satya first. It's a very clear bonus though, no doubt about that. The bonus is all fine, but I think the hands of Renu touched Satya first. And that's why the bonus gets off. That is the basic rule in Kabaddi, where when there is a contact, the defenders on the contact with the raider, the bonus is off. Whether it is 5, whether it is 6 or 7 defenders on the mat, doesn't matter. Raki Tawar comes in. So Navneet, you concluded by saying first the respect factor should be taken off from the Kabaddi match, the DD factor, and then things will fall in place. Yeah? Is that नहीं, what you want to say? रेस्पेक्ट तो हमेशा होनी चाहिए। इनफैक्ट सीनियर्स हो या जूनियर्स, आपस में रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना रेस्पेक्ट के कुछ नहीं होगा, और अगर हमारा आपस का रेस्पेक्ट खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो जो दीदी फैक्टर, वो जो मानसिकता की बात कर रहे हैं, वो जो ऑन द कोर्ट और ऑफ द कोर्ट जो बिहेवियर है, ये चेंज होना ज़रूरी है।
That is what I was trying to say. The DD factor on the court is not at all acceptable. And I think probably that is what you really need to get it out of your system very quickly. Palani Tuskers. Again. They're trying to come back into the game via 1 the point. defense. It's not working out. Number 1 out. Once again, Logeshwari from that left corner. और Couldn't do much. Time out. Palani और आपकी Tuskers. चर्चा को As थोड़ा Palani सा Tuskers, yeah, जी they हाँ will आपकी get their चर्चा timeout now. I think Navneet, the last one of this match. What's Nadia got to say now? அசிங்கமாக விட வேணாம் ரீசெண்டாக 20 பாயிண்ட் லீடிங் போயிடுச்சு ஓகேவா அதனால் 2 பேரும் ஆடுங்க கிடச்சதுன்னு ஆடுங்க இல்லை வந்து இங்கே டிஃபென்ஸ் நில்லுங்க ஓகேவா Yeah, she's just saying. अटैक कर रहा है ना तो उसको बढ़िया रोक के ही पकड़ना ये नहीं कि रेडर रवाना हुआ और अपन रवाना हो गए बस सही लगे यार Sohan giving away all his experience. But yeah, what Nadia was trying to say was don't extend the lead. Don't give away too many more points because that will probably come back to hunt us in the score difference. Subshika Mary probably trying for a bonus and then the hand touch. Yeah, the mutual respect for players, Bonus yes, point. that should be Palani there. Tuskers. And speaking of respect and speaking of not repeating the mistake, the DD factor. Navneet, yesterday there were the 4-pointers, 15-year-old player. Look at this. Yeah, this is what happened yesterday. And thank you so much for our content head, 4 points in one Match raid. over. How कान है वो बता देगी कि कौन जीता है और किसकी हुई है हार लेकिन Aravali arrows हमें कुछ नहीं लग रहे थे. You know, you saw that in that shot, isn't it? Probably they want to ये do यहाँ much पे more. यहाँ देखिए पीछे के जितने खिलाड़ी है वो मुस्कुरा रहे हैं आगे वाले शायद थोड़े सीनियर हो गए और वो थोड़े सीनियर थे लेकिन यहाँ पे सभी मुस्कुरा रहे हैं Yeah, correct. No, but all the more important for the Aravali arrows to put out that first victory points on the points table. Yeah, that 4-pointer raid again. Yesterday we saw what happened when Nikita was raiding. That 4 points that was just blown away. And again today Renu, when she was raiding, that 4 points was just once again blown away as a huge difference in terms of how the scoring pattern has been noticed. Yeah, comprehensive victory once again for the Aravali arrows. As Navneet, I'll request you to please, continue and hold fort as I will go in for the post-match presentation. जी हाँ बिल्कुल शुक्रिया नवीन और मैच समरी की बात करेंगे मैच नंबर 6 अभी खत्म हुआ है जस्ट जहां पर अरावली एरोज ने जीत प्राप्त की है 36 और पलनी को मिला है सिर्फ 16 पॉइंट की रेड में भी अरावली आ गई है 25 और 13 टैकल पॉइंट्स में 7 और 3 और 2 बार पलनी ऑल आउट हो गई उसके कारण 4 पॉइंट्स मिले अरावली एरोज को और एक शानदार सुपर रेड देखने को मिला है यहाँ पर देखिए बेस्ट रेडर निधि शर्मा 13 पॉइंट वहीं सुषमा शर्मा भारद्वाज बेस्ट डिफेंडर रही है लेकिन थोड़े से डिटेल में और जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल रेड का जो फैक्टर है दोनों टीमों ने 28 लगाया वहां पर अरावली एरोज ने जबरदस्त रूप से बाजी मारी है 19 बार वहां सक्सेस मिला है और टैकल्स की भी बात करेंगे तो अरावलीज ने थोड़ा सा सोच समझ के टैकल किया है 17 बार किया 7 बार सफलता मिली लेकिन पलनी वहीं पर 23 बार यानी कि प्रयास ज्यादा है लेकिन सफलता बहुत कम सिर्फ 3 बार वहां पर सफलता मिली इसके अलावा बेस्ट रेडर की बात कर रहे थे निधि शर्मा ने आज क्या खेल दिखाया है 13 पॉइंट उन्हें यहाँ पर मिले हैं सिर्फ 12 रेड यानी कि स्ट्राइक रेट निश्चित रूप से 100% से ज्यादा हो जाता है क्योंकि जितने रेड पॉइंट्स आपने पाए हैं उससे कम रेड आपने किया है 108% वहां पर सफलता आपको मिली है निधि कमाल का खेल और यहाँ पर हम देखेंगे कि हर जगह वहां पर निधि ने अपना झंडा गाड़ा है अंदर जाकर के 4 और 1 वहां पर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर में मध्य में भी 2-1-2 का फासला और बॉक्स लाइन और मध्य रेखा की बात करेंगे तो 1 और 1 यानी सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ है निधि के द्वारा जहां पर उन्हें पॉइंट्स नहीं मिला है क्या कमाल का खेल निधि ने दिखाया है बहुत ही शानदार तरीके से हर समय कॉन्फिडेंट नजर आए और उनको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था पलनी टस्कर्स के डिफेंडर्स के लिए और ऐसा लग रहा था कि वहां पर देखिए बटर सा लगा हुआ है एंकल होल्ड या किसी भी तरीके के होल्ड में निधि शर्मा आज नहीं आई वही दूसरी तरफ सुषमा शर्मा बेस्ट डिफेंडर 2 पॉइंट्स उन्हें मिले हैं टैकल में 5 बार
वहाँ पे प्रयास रहा और सक्सेस रेट 40%। आज के मैच की सबसे शानदार डिफेंडर सुषमा शर्मा। और थोड़ी सी पैकेजेस उनके बारे में भी हम देखेंगे और देखिए किस तरीके से वहां पर बहुत शानदार तरीके से सुषमा ने भी लगातार एंकल होल्ड्स किया है। पॉइंट्स टेबल की तरफ यहां पर नजरें दौड़ाएंगे तो मुरथल और हिमालय दोनों ऐसी टीमें रही है जो लगातार मैच को जीती है। पहले और दूसरे पोजीशंस पे रही है अरावली और पंचाला तीसरे चौथे पोजीशन पे। वहीं अगर पेरियर पैंथर्स की बात करें, पलनी टस्कर्स की बात करें तो जीत का स्वाद अभी तक उनको लगा नहीं है। और ध्यान रखने वाली बात है कि अगले राउंड में सिर्फ पहले 4 टीम जाएंगी, इसीलिए पेरियर पैंथर्स और पलनी टस्कर्स को अब कुछ बेहतरीन खेल दिखाना पड़ेगा, वरना आप हो जाएंगे आउट। और इस शानदार मैच में जेएसजी वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब मैच खत्म होता है तो जुड़ते हैं हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। आज रहेंगे नवीन। Hello and welcome to this post-match presentation here for match number 6 here at the JSG Women's Yuva Kabaddi Series. And once again, Aravali Arrows have made sure when they get that initial lead, they will not allow the opponent to come back in. First victory for the Aravali Arrows, and it was a big marginal victory of 20 points. Really well done. And before we go ahead and congratulate the players and give them the goodies and giveaways, we would want to first thank our partners. Our broadcast partner, of course, is Fan Code. Healthy snacking partner, the Flavor of Republic. Pain relief partner is Hoop. Healthcare partner is Mangalam Plus Mary City Hospitals, Jaipur. Physio partner is JSS College of Physiotherapy, Mysuru. And the travel partner is Ease My Trip. And for this wonderful post-match presentation, I'm really happy to introduce our guest. It is Vaishnavi AS. Hi, Vaishnavi. And also, why am I so happy is because I think for the very first time, we've got more number of women team that has been put across to the anti-corruption unit. Yeah, that is good. I'll tell you what, my team, please put women out there. They are good in stopping corruption. Anti-corruption is very, very good. So more women in the anti-corruption unit, very well done. Right, going ahead for the first award of this match is the best raider, and that is Nidhi Sharma for her wonderful Super 10 of 13 points from the Aravali Arrows. She was good, isn't it, with all those raids, all those kicks that came in and the way she was escaping. Wonderful work. Of course, the defense of the Palni Tuskers was going ahead and attacking her too much. But 13 points for the Aravali Arrows. Of course, Sohan Saab, the coach, will be happy of what Nidhi Sharma has done today. And also, after the check, it is that hamper from Hoop that is going in. Right. So that is the Hoop hamper. As it was, come on, Vaishnavi there will be no change in the name. Vaishnavi, you held it correctly, don't worry. Come on, the men behind the camera just making Vaishnavi nervous. Right, the next award is the Best Defender Award, and that is going to Sushma Sharma for her couple of points for the Aravali Arrows. Yeah, right, as Sushma Sharma wants to run in and come to take the check, she was also stopping the Raiders from running away from the points. Sushma, wonderful effort. Sohan Saab again will be happy with your effort. और check के बाद आपको मिलेगा एक अच्छा सा एक hamper भी Clovia के ओर से, because it was that wonderful tackle that you put in. लेकिन Sushma wanted to talk. Sushma बात करना चाहती थी mic पे, नहीं? She was only wanting the check. But the next award is the Kabaddi Ka Kamal moment of the match award, and that is definitely that 4-pointer raid which once again broke the backbone of the Palani Tuskers. It is Renu's 4-pointer raid. Let's see that.
similar error, isn't it? Even yesterday, the Palni Tuskers' defense, especially from the right corner, Sneha, went against Nikita in the similar fashion. And then today, similar fashion against Renu, 4-pointer raid that has been given away. And also, after the check, she will receive the hamper from the Flavor Republic. As we will thank Vaishnavi for her presence. Thank you so much, Vaishnavi. As Renu, please, आइए मेरे पास. तो 4 पॉइंट मतलब 4 चांद लगा दिए थे आपने किसके मुंह पे? आपके कोच साहब के मुंह पे, चेहरे पे, वो स्माइल के ओर से. जब आपने 4 पॉइंट लिया था उनके स्माइल तो मतलब बहुत बड़ा स्माइल आ गया था. लेकिन 4 पॉइंट से पहले ये बताइए, कल और आज का डिफरेंस आप बताइए, क्योंकि कल थोड़ा वीक था आपका परफॉर्मेंस और आपके टीम ने भी अच्छी नहीं खेली. तो आज का डिफरेंस बताइए, क्या आपने जाके डिस्कस किया पहले? हमने टीम से मिलके स्ट्रेटेजी बनाई भी. कल तो हम थोड़ा लूज कर दे गए थे, तो आज काफ़ी हमारी टीम ने डिफेंस भी अच्छा किया और रेडिंग भी अच्छी की, तो उस बदौलत हम आज जीत पाए. और सोहन साहब ने क्या बताया था आपको कल हारने के बाद? उन्होंने क्या बताया? आज के मैच से पहले क्या बताया? उन्होंने ये बताया था कि भी खुल के खेलो, ड्रो मत, जैसे आए तो मारो. और आपके 4 पॉइंट के बारे में तो बात करनी ही है अभी. और राइट कॉर्नर के पास आप गए, लेकिन वो एस्केप फैक्टर आपको लगा? आपको पहले ये बताइए, आपको महसूस हुआ 4 डिफेंडर ने आपको छुआ करके? सच बताइए, कैमरा में झूठ नहीं बोल सकती आप. मैंने तो 5-6 के डिसाइड करा. 5 के डिसाइड किए थे इन्होंने. कम ऑन रेणु जी, 4 लोग छुए थे का महसूस का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं 5. अच्छा ठीक है, ये तो बनता है रेडर के लिए. तो कितना महसूस कितना हुआ वहां पे? अच्छा महसूस हुआ सर. नहीं, कितने लोग ने टच किया करके महसूस हुआ? 4-5 लोग. 4-5 लोग. चलो लिपट लो. मैं वो सागर पंचाल और सबको बोलूंगा, रेफरियों को, कि वो क्या आपके फील पे भी थोड़ा जाए. नहीं ठीक है चलेगा. सो थैंक यू सो मच रेणु जी. आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच और एंजॉय दिस विक्ट्री टुडे. थैंक्स अ लॉट. Look at this. Raiders are so selfish, isn't it? 4-5 points. Totally, she already got 4 points. But yeah, that is what the Raiders should be, very hungry for points. Right, so right now it is time for going in for that post-match show of all that has happened in the entire day. We will join you soon in Yuva Live. I'm Navin Shori alongside with Harshit. We will come to you soon. Check. Audio check. Q1, can we have the mic check? Check. Ready.